examples of success stories by IITians. If you would like to join one of these companies, then IIT is your first turning point. The Indian Institute of Packaging is committed to make India as a focal point of contemporary development in art, science, technology, and engineering in the field of packaging. I think this was about the institute. You have seen we have basically the 5 centers at headquarters and Mumbai. We basically offer the 3 services to the industries of the entrepreneurs. We have various courses in the field of packaging. We do. I think now the PowerPoint can be run. Okay, we are offering various courses in the field of packaging, which is basically the knowledge partner. We are sharing the knowledge of packaging. As you know, basically in any products, आप जो भी सामान बनाते हैं, after the product is manufactured, we need to pack it. Unless we pack the product, it cannot be kept for longer time. Whatever may be the product, it may be food, it may be consumer goods, it may be pharmaceutical, whatever may be. You can come to I think the 6th or 7th slide. Okay, so packaging actually best can be compared with the dress material we cover. You know, we cover our body always. We cannot go without any clothes in our body. We cannot go naked. So similarly, all the products we manufacture, it requires a cover, that is packaging. We use many types of cloths: cotton cloth, silk cloth, woolen cloth, leather jacket, everything. There are different types of packaging material for our body, because at a different time or different season, a different climatic zone, we need different types of clothes. Similarly, the products, whatever we manufacture, we need to cover the product with different types of cloths. That is basically packaging. In a layman, अगर हम एकदम सीधा बोलते हैं कि हमारा जैसा कपड़ा पहनना पड़ता है, so for the products we need to cover the products with their packaging. That is called packaging. Packaging actually can be there are 4 different types of packaging materials. I think this photo I have to change the slide. Change the slide to slide number 6. Mark or whoever is just keep changing slide 6. Hello. You go down. These are all already have shown in the videos. These are on the background. So as I told you, so we have the headquarters Chennai, Kolkata, Delhi, Hyderabad, and Ahmedabad. And the latest center is coming up in Bangalore. I think it is under construction now. I think the inauguration will be done in this month or the next month. And one more center is supposed to come up in Guwahati. I think in the year of 2015 we have a meeting in Guwahati that what is called that the Radisson Blu Hotel, and we are supposed to establish a center, but due to some problem because the land which was given to us by the government of Assam is not suitable for construction of the building and other thing. So हम लोग वहाँ पे नहीं किया. We have returned the land to the Assam government, and we are waiting for the government to give a ready building to occupy, so that we can start a center at Assam, which will be giving service to the northeastern states. Next slide, please. So if you see the packaging basically industries. Next, go to the next one. Packaging industries, basically there are 3 types of industries we call. First of all, we call the packaging material manufacturer, the raw material manufacturing companies. Then next one is called packaging material converter, who converts the packaging material to the packages from the raw material. And the third one is called packaging user industries. User means those who are manufacturing product, like all of you. You are doing some product manufacturing, either handloom or handicraft or food, isn't it? You manufacture some goods. So whenever you manufacture the goods,
once the product is manufactured, you need to pack it. So you have to use the packaging materials. That is, you are coming under a user industry. You have to use the packaging materials. Correct? So go, I think change the slide please. Next one. This is already covered in the videos. Activities, you leave it. Go to next one. These are the different courses which IIP conducts. The 2 years PGDP course, 18 months diploma, and 3 months certificate course. Yeah. Now if you keep come back. Earlier one. Yeah. So now you see the packaging materials. Basically, this one more back. Yeah. So these are the three industries as I told you. The packaging industry, basically the raw material manufacturing company, the packaging material converter, and the packaging user industry. These three industries termed as the packaging industry. Now, if you see the whole of Northeast, there is no packaging material manufacturing company. If you see the industry scenario in the northeastern states, there are all users. Hardly there are few converters in the Assam. But if you see in northeast, we know there are 8 states, correct? We know 7 sisters and 1 brother. Brother is called Sikkim, correct? All the sister states, there is, other than Assam, there is no industry manufacturing the packaging materials. In Meghalaya, all are user industry. There is no converter. So how to pack your product? You have to get your packaging material from outside the state, correct? So yesterday also the Honorable CM was talking. There is an immense opportunity in the states of Meghalaya also and other states also. If there is some packaging material manufacturing company, because all are user only. You either manufacture food or you manufacture some handloom or manufacture some handicraft, whatever making, whatever the products आप लोग बनाते हो, उसको packing करने के लिए you have to get the packaging material from outside, correct? So if any company come up in this state to manufacture the packaging materials, any converting industry, correct, raw material will be available, but it has to be converted. Like if say they have given a gift with a wooden box, correct? Meghalaya and all this state, we know it is a rich of pine wood and other things, correct? There is a wood. Wood is another raw material of packaging. Now there should be some industry who will make this wood convert into the boxes. They are called converter. Earlier there was few paper mills in the northeastern states like Assam and other people. No, there was a Hindustan paper mill, you might be knowing. Now this company is no more. It's closed. It is a Government of India company. Now if you see in packaging, there are 2 types of materials we call as a packaging material. One is called scientific packaging material. Another one is called traditional packaging material. What are scientific packaging materials? The materials which are scientifically produced by the industries with the help of machine and technology. इसको बोलता है scientific packaging material. There are only 4 type of material which are called as scientific packaging material. क्या-क्या है उसके अंदर? Only 4 materials. If you go to any mall, if you go to any country, you will not find any material other than these 4 material. ये 4 material को बोलता है scientific packaging materials. What are they? There are paper. आप देखते होंगे lot of things are packed with the paper. Correct? Paper is one of the scientific packaging material. So the paper mill who mix or who manufactures the paper are called as packaging raw material manufacturing company. Now this paper can be converted into board, paper board, or maybe converted into the packages. Like there are a lot of paper bags nowadays used in the shopping mall. So who are manufacturing this? So paper mill से paper खरीद के they are converting this into bags or cartons or boxes. So they are called as a packaging material converter. Now, if you see the second material, it is called glass. All of you know, I think they have given me some gift of honey and everything. These are packed in a glass container. If you see the pharmaceutical, if you see tomato ketchup, if you see other say wines and other thing, these are packed in the glass bottles. Glass is another scientific packaging material, and glass is basically manufactured from, what is the source of glass? कांच कैसे बनता है? हाँ? Glass is manufactured from silica, sand, बालू होता है ना, बालू, sand होता है. Sand से उसको हीट करके गलाना पड़ता है. If you heat it, तो आप सोच सकते हैं कि बालू को गलाने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा. ये स्टोन ना, स्टोन को गुरा करेगा तो it becomes sand. तो sand को आपको गलाना पड़ेगा, then it becomes starch. So it requires a temperature of 1500 degrees temperature. 1500 डिग्री टेम्परेचर लगता है. That is the reason
ग्लास इज ऑलवेज कॉस्टली, कांच बनाने में बहुत खर्चा होता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ग्लास इज ए ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल लगता है बहुत, तो इसके लिए कांच का दाम ज्यादा है. यू कैन सी, से आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इफ यू सी टोमेटो केचप लाइक किसान और मैगी, है ना, ये देखा होगा कि दे आर सेलिंग द बिगर वन इन ए ग्लास बॉटल. 1 किलो टोमेटो केचप कांच का बोतल में मिलता है ना. टोमेटो केचप ऑफ से किसान ब्रांड, हाउ मच इज द कॉस्ट? 1 किलो टोमेटो केचप का कितना बोतल, एक बोतल का दाम कितना है? 155 rupees. You are correct. 155 rupees, say 150 rupees. Now, if you buy the same brand, वही टोमेटो केचप अगर आप पाउच में भी मिलता है, आजकल देखा होगा, पाउच में मिलता है ना, रिफिलेबल पाउच, ऊपर में क्लोजर भी है. वो पाउच में अगर आप want to buy, how much is the cost of pouch? Same brand, same Kishan, same 1 kg packed in a plastic pouch. How much the cost? कभी खरीदा है? हाँ? Price, but it is lesser than the glass. Less than glass bottle, na? If you buy it, it is at the rate of say 120 rupees. Last week I purchased Kolkata. The rate is 120. So 120 rupees, same product, same quality, made by the same company. Whenever we buy the glass bottle of the same thing, we are buying with 155. 35 rupees is the extra cost. किस लिए आता है? Because that is the cost of packaging. I told you glass is a very costly material, but और एक दूसरा problem है. If we pack in a glass, अगर मेरा हाथ से गिर गया, what will happen? I am carrying, तो पेपर बैग में लेके जा रहा है ना, आजकल प्लास्टिक बैन है, वो दुकान से दिया पेपर का थैली में बोतल लेके जा रहा हूँ, क्या होगा? वो भारी हैंडल गिर गया नीचे, तो क्या होगा? You can imagine. That is the biggest problem with the glass, because if it falls from a height, it will break. दाम भी ज्यादा है, लेकिन खतरा भी ज्यादा है. It will break, and if it is break, product is lost. And while cleaning or sweeping, if some glass particle, wound you, हाथ भी कट जाएगा, your blood will come out. This is the problem. Now the third packaging material is called metal. Metal आप लोग देखा होंगे, you buy some coffee, you buy some say milk powder, baby food, Amul, Nescafe, or Nestle, or whatever you call as a say Nan, Cerelac. It is packed in a tin container. Even lot of processed food also are coming in a tin. So if you buy a tin, if you see the, whenever you buy any packet or any packaging containing food, you might be seeing that is written as a FSSAI number. FSSAI is a mandatory. We have to follow the Food Safety Act. FSSAI मतलब Food Safety and Standard Authority of India, which was implemented in the year of 2006 by the Act of Parliament. Because Government of India के ऊपर काफी प्रेशर आया था, because if the FSSAI is being not followed in our country, India का बाहर में एक्सपोर्ट होने को नहीं देगा. But because of not having the majority in that time Congress government was there, not majority in the Parliament, so they could not sign the bill. Lot of MP and MLA opposing. They बोलता है नहीं sign करना है bill. So this is the problem. So what happened? On the last day, इंडिया में जानते हैं ना आप लोग, अगर कोई राज्यसभा में पास नहीं होता है कोई बिल, तो क्या करते हैं? It can be passed by the President of India, because supreme power कौन है? President है. So what happened? On the last day of the retirement of प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अब जानते हैं ना प्रणब मुखर्जी के पहले जो हमारा प्रेसिडेंट थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैडम का लास्ट दिन में कांग्रेस ने रात को 12 बजे जाके उसका घर में साइन कराया, बिकॉज वो बिल अगर नहीं लागू होता, India was banned for exporting to the other countries. हमारा सामान बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा. It is a mandatory requirement, होना चाहिए था, तो बाद में कराया है. तो any food business operator, आप लोग जो खाने वाला चीज के साथ जुड़े हुए हैं, and each and every company who are dealing with the food, आप लोगों को फूड सेफ्टी कानून फॉलो करना है, and you have to get a registration or license from the FSSAI, and that license number or registration number must be printed on the container. And उसका कुछ कानून है, एक भी प्रोडक्ट को आपको लिखना पड़ेगा यूज बाय डेट. पहले था बेस्ट बिफोर, नाउ इट हैज कम एज ए यूज बाय डेट. यूज बाय डेट नहीं लिखेंगे तो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, यू मे बी पुट इन द जेल. आपको एफएसएसआई का जो कानून है, यू हैव टू फॉलो टोटो एज इट इज मेंशन्ड इन द एफएसएसआई एक्ट.
फूड सेफ्टी एक्ट आपको जानकारी लेना पड़ेगा। आपको अगर जानकारी नहीं है, यू लॉग ऑन टू द गूगल में जाके टाइप करिए फूड सेफ्टी एक्ट पैकेजिंग रेगुलेशन 2018, फूड सेफ्टी एक्ट लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020। वो 15-20 पेज आएगा, पढ़िए उसको, पढ़ के उसको देखिए लेवल के ऊपर क्या क्या चीज लिखना पड़ेगा। इफ यू डोंट राइट यू आर मेकिंग ए पनिशेबल ऑफेंस, यू मे बी पुट इन द जेल। जेल में रखेगा 3 साल तक, आपको जेल में होना पड़ेगा, 5 लाख रुपए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज मैंडेटरी एंड इट इज ए रेगुलेशन। तो फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक वो प्रोडक्ट के ऊपर आपको लिखना पड़ता है व्हाट इज द, जो आगे चलिए पीछे व्हाट इज द शेल्फ लाइफ, पहले का बेस्ट बिफोर, वो भी हमें लिखना पड़ता है। यूज बाय डेट, कौन सा डेट तक वो खाना खा सकते हैं, उसके बाद में उसको फेंक देना पड़ेगा। वी हैव टू राइट यूज बाय डेट, करेक्ट। पहले का बेस्ट बिफोर, कि कोई बेस्ट बिफोर मतलब क्या है, द टाइम एट व्हिच द प्रोडक्ट विल बी बेस्ट ऑफ क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। उसके बाद में क्या होगा, वो फेंकना पड़ेगा क्या। बेस्ट के बाद क्या आता है, we know there is a superlative degree of good better best, तो हम बोलते हैं वो तो बेस्ट है, बेस्ट के बाद भी 1 महीना है वो बेटर है, बेटर के बाद भी 2 महीने खा सकता है, उसका टाइम गुड है, करेक्ट। दैट इज आर्गुमेंट, लॉ है तो उसका है ना, उसका इसके भी है। तो टू प्रिवेंट दिस लॉ नाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी कि आपको लिखना पड़ेगा यूज बाय डेट, कुछ डेट तक वो खाना खा सकते, उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा, करेक्ट। इफ यू सी एनी प्रोडक्ट packed in all these different packaging material, आप दिखेंगे कि if it is packed in a tin container, the life of the product is maximum. Best before will be always the maximum number of days if it is packed in a tin container, metal container. Metal में 2 तरह का metal packaging में यूज होता है। One of the metal is called tin, another metal is called aluminum. ये 2 metal यूज होता है packaging में। And among all these packaging material, whatever we call, metal is the best packaging material. Any product if you pack in paper, in glass, in metal or in plastic, the quality of the product will be retained as good as manufactured if you pack it in a metal container. Metal सबसे अच्छा पैकेजिंग है, लेकिन metal का क्या प्रॉब्लम है, दाम ज्यादा है। एंड आपका हाथ से गिर गया तो क्या होगा, मेटल तो टूटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, it will get D-shape। यहाँ पे गिरा रहेगा तो क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा ना, खराब लगेगा दिखने के लिए। And the fourth packaging material under the scientific category is called plastic. प्लास्टिक तो हम देख रहे हैं काफी चीज प्लास्टिक में यूज हो रहा है ना। एंड प्लास्टिक ऐसा है कि हमारा जिंदगी प्लास्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। विदाउट प्लास्टिक वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड, ऐसा हो गया आजकल। लेकिन इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करने से प्रॉब्लम भी हो रहा है। देयर इज एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट यू कैन फाइंड प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक्स which creates a pollution, correct? But whatever the plastics are used in the packaging, most of the plastics are thermoplastics। बोलते thermoplastics मतलब thermo मतलब heat, thermo plastic मतलब behaving as an elastic। elastic क्या होता है, किसी से लंबा होता है, छोटे का तो छोटा होता है ना, रबर बैंड इलास्टिक है ना। तो मतलब क्या हुआ, thermoplastic का मतलब है if we give heat the plastic get melted, गल जाएगा। if we cool down, ठंडा करने से प्लास्टिक अगेन जम जाएगा। जो प्लास्टिक ऐसा माफिक नेचर है उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। एंड ऑल द प्लास्टिक्स व्हिच आर यूज्ड इन द पैकेजिंग आर ऑफ थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। उसको गर्म करने से गल जाएगा, ठंडा होने से जम जाएगा। दैट मींस ऑल दिस प्लास्टिक्स व्हिच आर यूज्ड इट कैन बी रिसाइकल्ड, हम दोबारा बना सकता है। लेकिन दोबारा बनाने के लिए उस सारे को कलेक्शन करना पड़ेगा ना। ये हम वातावरण में फेंक देता है, ड्रेन में जाके छोटा हो गया, रास्ते में गिर गया, वो पाइप के अंदर घुस गया, who will take it all these things? So basically each and every government they have a department called solid waste management department। solid waste management department उनका काम है ये सारे वेस्ट को मैनेज करना है। they has to collect it back, they are not able to do that, उनका प्रॉब्लम हो रहा है। so until and unless वो क्या कर दिया, let us put a ban on plastic, वो बैन लगा दिया। लेकिन बैन लगाने से कैसे होगा, आदमी को जो सुविधा वो यूज करेगा ना। ये कार्ड में किसका बनाया, देखिए प्लास्टिक का है ना। ये जो बेल्ट लगा हुआ है इसका तो ये भी प्लास्टिक है। विदाउट प्लास्टिक वी कैन नॉट मूव। ये माइक्रोफोन ये प्लास्टिक का है, टीवी का जो स्क्रीन है ये प्लास्टिक का है। वी कैन नॉट सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम आवर लाइफ, नाउ डे टू डे लाइफ, है ना। वो भी देखिए वो हमको दिया है वुडन बॉक्स, अच्छा गिफ्ट दिया है, बट इट इज रैप्ड विद व्हाट,
मेघालय तो बोलते हैं प्लास्टिक फ्री जोन है ना? हम ऐसा जगह में भी देखा, आई विजिटेड नो तेजपुर यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं ना असम में है बड़ा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेजपुर, वहां पे लिखा हुआ है कि ये प्लास्टिक वर्जित प्लेस है, नो प्लास्टिक इन द कैंपस, ठीक है? वो लिखा हुआ है कि दिस इज ए प्लास्टिक फ्री जोन, नो प्लास्टिक टू बी यूज्ड इनसाइड द तेजपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। लेकिन लिखा किसके ऊपर? जिसके ऊपर छपा है दैट इज आल्सो प्लास्टिक। गॉट इट? सो वी आर, ये जो लिखा है देखिए, ये लगाया बैनर, प्लास्टिक हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन हमें उसको जुडिशियल यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक इट ए ओथ, हम प्लास्टिक यूज करेगा जरूर, लेकिन उसको इधर-उधर फेंकना मत। वी हैव टू डिस्पोज इन द डस्टबिन ओनली, बिकॉज़ अगर देखिए ये प्लास्टिक का नहीं होता, पहले के जमाने में क्या था, देयर आर आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट ड्राइंग टीचर, वो क्या करेगा, वो एक कपड़ा लेगा, टेक्सटाइल क्लॉथ के ऊपर पेंसिल से पहले लिखेगा, स्टेंसिल बनाएगा, फिर वो ब्रश से पेंट करेगा। ये बनाने के कितना दिन लगेगा उसको? If you want to make this, it will not take less than 3-4 दिन लगेगा। उसका मजदूरी कितना है? पर डे इट विल चार्ज 1000 रुपीस, 4 दिन का 4000 रुपया। फिर कपड़ा का दाम, and this can be printed in a machine within 10 minutes। 10 मिनट में प्रिंट हो जाएगा मल्टी कलर में, और इसका दाम भी कितना है? Say if it is 4 feet by 6 feet, 24 square feet, 24 into 10, कितना हो गया? 240 रुपया। बट इफ इट इज डू इन टेक्सटाइल क्लॉथ में करना है तो उसका दाम होगा कम से कम 5 से 6 हजार रुपए, है ना? दिस इज द डिफरेंस इन द, यू नो, बट प्लास्टिक में बहुत सारा सुविधा है, लेकिन उसको हम ही लोग हैं जो प्लास्टिक को बर्बादी कर दिया, उसका नाम खराब कर दिया, बिकॉज वी आर नॉट डिस्पोजिंग इट इन द राइट प्लेस। हम वो तंबाकू खाएगा रास्ते में फेंक देगा, चिप्स खाएगा रास्ते में फेंक देगा। वी शुड नॉट, वी कीप इन द पैकेट, आपको जेब में रखो, बस से उतरेगा, उतर के फिर डस्टबिन में फेंको, देन दिस थिंग कुड बी प्रोटेक्टेड। प्लास्टिक के ऊपर बोलने जाएगा तो इन बार बोल देगा हम। सो द फोर्थ मटेरियल इज प्लास्टिक। प्लास्टिक में बहुत सारा प्लास्टिक्स है, व्हाटएवर द यूज्ड इन द पैकेजिंग आर इन थर्मोप्लास्टिक नेचर, बोलता है उसको हीट करने से गल जाएगा, जब ठंडा करने से जम जाएगा। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक मोस्टली यूज्ड। गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट मटेरियल को बोलता है ट्रेडिशनल पैकेजिंग मटेरियल। हमने बताया था पहले, these four materials, paper, glass, metal, plastic, are termed as scientific packaging material। लेकिन जहां पे scientific material नहीं है, and when the scientific material was not invented, discovery नहीं हुआ, packaging is there still the civilization started, है ना? वो हम जानते हैं जो भी आदम एंड ईव का पैदा हुआ ना, भगवान ने दो क्रिएचर पैदा कर दिया, आदम एंड ईव। उसको बोला वो एप्पल मत खाओ, वो एप्पल तो खा लिया, है ना? जिसको ऊपर हम रोक लगाएगा, आदमी को क्रेज है दैट ही हैज टू यूज, वो भी प्लास्टिक को बैन लगा दिया, वो क्रेज है प्लास्टिक ज्यादा यूज करेंगे, है ना? तो ईव और आदम जो खाना खाया, एप्पल खाने के बाद दे हैव स्प्रेड द, यू नो, स्प्रेडिंग हो गया, ह्यूमन नेचर पूरा जन्म ले रहा है। तो क्या होगा? नाउ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पैकेजिंग तो है, पैकेजिंग इज देयर इन द सिचुएशन लास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन जो भी साइंटिफिक पैकेजिंग मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल, तो भी हम क्या करते थे? दैट टाइम वी यूज्ड टू यूज दिस मटेरियल, these are called God gifted material, these are all natural packaging material जो हमारा वातावरण में उपलब्ध है। These all materials are available in the ecosystem, हम अपना वातावरण से लेके पैकेजिंग में यूज करते हैं। These are the materials called as traditional packaging material, or rather we can say natural packaging material, जो हम नेचर से लेके यूज करते हैं। उसमें क्या है? earthen pot, you know, earthen pot में तो पहले का जमाना में जो भी हमने पढ़ा है, स्टोन एज, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उस टाइम लोग कैसे खाना पकाता? They used to cook the food in the earthen pot. earthen pot में कोई पैक होता है, आप कहिए कलकत्ता में जाइएगा, स्वीट कार्ट इज वेरी फेमस इन कलकत्ता, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, वो पैक होता है earthen pot में। बैम्बू बास्केट, केन बास्केट, आप जानते हैं यहाँ मेघालय में या सारे नॉर्थ ईस्ट में देयर आर लॉट ऑफ बैम्बू एंड केन बास्केट्स आर यूज्ड, बिकॉज़ यहाँ पे प्लास्टिक तो पहले बाद में आया, जब प्लास्टिक नहीं था वी यूज्ड टू यूज दिस बैम्बू बास्केट एंड केन बास्केट। देन लीव्स इधर पे भी यूज होता है। आज भी हम उधर खाना खा रहा था, हम देखा कि लोकल राइस वो केला का पत्ता में पैक करके वो लोग लेके आ रहे हैं। लीव इज यूज्ड ना, लॉट ऑफ लीव्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग। banana leaves इज वेरी कॉमन, उसको ऊपर हम रैपिंग करके खाना बना पकाता है, पैकिंग करते हैं। देन वुडन बैरल एंड वुडन बॉक्सेस, वो भी देखो आपके सामने है वुडन बॉक्सेस, नाइसली दे हैव ब्यूटीफुल पैकेट बनाया है, वुडन बॉक्स फॉर गिफ्टिंग द, यू नो, रिसोर्स पर्सन्स। So wooden box, wooden बैरल कभी यूज हो रहा है। एंड देन जूट बैग, jute is another agricultural commodity, jute
फार्मर लोग उगाते हैं एंड देन फ्रॉम द जूट ए रिक्वायर्ड फैब्रिक बना के उसको टेक्सटाइल में मिल में दे मेक द फैब्रिक को स्टिचिंग करके दे मेक द बैग. So these are all called traditional packaging material यानी natural packaging material. जब scientific material नहीं था या जहाँ पे नहीं है, most of the northeastern states, आप जाइए अरुणाचल में, आप जाइए मिजोरम में, you go to Nagaland, all these places there is no scientific packaging manufacturing company. वो लोग भी सामान तो पैक करना है, कैसे करेंगे? So they are depending on the भगवान देता है, God gifted material they are using from taking from the nature. So these are called as traditional packaging materials which are available in our nature. Yeah, next one. Now there are few materials which are called as ancillary packaging material. These are not the main packaging material, but these materials are required to complete the packaging operation. Packaging को काम को पूरा करने के लिए these are the materials which we must need. Otherwise packaging cannot be done. जैसा caps and closure. है ना? अब देखिएगा कैप्स एंड क्लोजर अगर हम बोलते हैं कि ये ग्लास में कुछ सामान पैक कर सकता है क्या? इसका कवर नहीं है, हम गिर जाएगा, है ना? If we keep it, कोई धक्का लगेगा सामान गिर जाएगा. This is not having the caps and closure. So this cannot be used as a packaging material. This can be used as a storage device. स्टोर कर सकता है लेकिन पैकिंग नहीं कर सकता. पैकिंग करने के लिए we have to have a closure. तो closure is a packaging material which is called ancillary packaging material. Then labels. आप लोग जानते हैं इसमें देखिए इसमें जो हम बोलते हैं अगर इसमें बोलेंगे what is there inside we don't know इसका अंदर क्या है. It may be water, it may be some chemical, it may be some poison, correct? We don't know what is there inside. तो इसको जानकारी के लिए क्या चाहिए? We have to have some है ना label. That means label is doing the function. One of the function of packaging is communication. Packaging must communicate with the consumer. अगर हम दो आदमी मिलते हैं ना, आप लोग सब अगर किसको से जान पहचान पहले नहीं होगा, if you don't know the previous, आपको पहले मुलाकात नहीं हुआ, then when you sit together, आप पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ से आया, before I start, madam has given all information about me, correct? So packaging का एक काम है, अगर उसको पूछेगा, आप क्या हो, आपका नाम क्या है, जवाब नहीं देता है ना, गूंगा है. So who will do the function? That function will be offered by label. तो पैकेजिंग में एक लेवल होना बहुत जरूरी है, which will provide all information whatever we ask. As a human being, we are all curious. हमें जानने का बहुत इच्छा है. Every human being have a nature. हम जानकारी लेना चाहता है. हम पूछेगा आप क्या करते हो, कहाँ से आया, है ना, आपका गांव किधर है ना, how do you come, आप कौन सा बिजनेस करते हो, कितना मुनाफा होता है. So all the information अगर आप पूछेंगे तो जवाब कौन देगा? It is to given by the level. So level होना बहुत जरूरी है. Without level packaging cannot be completed. Then BOPP cell adhesive tape. बॉक्स को कैसे बंद करेगा? आप लोग you might be buying lot of materials from Amazon, Flipkart. वो जो बॉक्सा में आता है, वो बॉक्सा कैसे बंद करते हैं? It is put by a tape. Tape लगाया ना, that is called BOPP cell adhesive tape. Closing of the boxes. Then strap, clip, bubble film. If you buy anything, there is a plastic film which is having lot of bubbles for protection of the product. ये कांच का बोतल हम कैसे लेके जाएंगे? It has to be covered with a bubble film. Otherwise वो टूट जाएगा. So bubble film is a cushioning material, thermocols and all these things. So these are called as ancillary packaging materials, which are not the main packaging material, but these materials are required to complete the packaging operation. Packaging operation को पूरा करने के लिए we must use this. Otherwise the packaging cannot be completed. These are called as supporting material or ancillary packaging materials. Yeah, next one. Now, you see this is an example of traditional packaging material vis-a-vis scientific packaging material. This is a product of West Bengal, a very famous product. It is called sweetener, natural sweetener, jaggery, liquid jaggery made from date palm tree. खेजूर का जानते ना, खेजूर का पेड़ जो अरेबियन डेट्स होता है, खेजूर का पेड़ से एक सिरप निकलता है in the winter season, and that syrup if we boil it becomes a sweetener, and it is a natural aromatic sweet. उसमें अच्छा खुशबू है, and most of the Bengalis आप लोग जानते हैं कि बंगाली लोग मीठा खाते हैं, है ना. विंटर का सबका घर में पायस बनेगा, खीर बनेगा, मिल्क में चावल डालेगा, उबालेगा, then this jaggery has to be added. Without jaggery वो
पायस नहीं खाएगा, वो जगरी डालने से वो खुशबू आता है एंड इट इज गिविंग ए वेरी गुड कलर. सो दिस इज द प्रोडक्ट. इफ यू विजिट कलकत्ता एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट विल फाइंड विश्व बांग्ला शॉप मिलेगा आपको. दोनों एयरपोर्ट का एंड में देयर आर टू शॉप्स, विश्व बांग्ला शॉप. इफ यू गो टू द विंटर सीजन, विश्व बांग्ला शॉप में जाइएगा, जरूर आपको ये मिलेगा. सो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वांटेड टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट. दिस इज ए विलेज प्रोडक्ट, गांव में बनता है. बिकॉज़ 30 फीट 20 फीट लंबा पेड़ में कौन चढ़ेगा? शहर में तो पेड़ होगा नहीं एंड पीपल कैन नॉट क्लाइंब आल्सो. तो गांव में लोग पेड़ में चढ़ के उसको ऊपर में क्या करता है, वो पेड़ को ना छिलेगा, दे विल रिमूव द स्किन एंड देन वहां पे एक बैम्बू लगाएगा और एक हंडी बांधेगा, दैट मिट्टी का हंडी वहां पे लगा के रखेगा. रात भर इट विल सिरप विल कम, टप टप करके उसमें गिरेगा एंड दैट सिरप इफ दे डू नॉट मेक इट जैगरी, इट विल गेट फर्मेंटेड. फर्मेंट हो गया वो अल्कोहल बन जाता है, बीयर बनेगा, अल्कोहल, है ना. तो ये स्वीट बहुत फेमस है, गांव में बनता है. गांव के लोगों को कैसे मालूम पैकेजिंग कैसे होगा? दे आर डूइंग इन द अवेलेबल मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल इन द विलेज. दे आर डूइंग दिस ट्रेडिशनल पैकेजिंग. तो इसको अगर साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, this consultancy was given by IIT to develop a scientific packaging and packaging of this jaggery because it is an illegal pack. इसका अंदर में अगर पूछेगा आपका नाम क्या है, जवाब है नहीं है. उम्र कितना है, जवाब नहीं है. यहाँ पे सब कुछ है. तो it is a, as per the Food Safety Act, it is a punishable offence to pack this product. दुकान को जो बिक्री करता है, वो दुकानदार को अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर जाके जेल में डाल सकता है. डालता नहीं अलग बात है, लेकिन he can be put behind the jail because this packet cannot be sent as per the Food Safety Act. It cannot be sold. इसमें लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, नवे लिखो नेचुरल डेट पाम लिक्विड जैगरी. क्या नाम है? ये नाम है. Who is manufacturing? Product of West Bengal खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. सारे कुछ लिखा है. कहाँ पे बनता है यहाँ पे लिखा है, फैक्ट्री एड्रेस दिया हुआ है, बारकोड लगा हुआ है, दाम कितना है यहाँ पे लिखा है, हाउ मच इज द प्राइस. Every information has to be written in a food pack, otherwise it is an illegal pack. As per the Food Safety Act, you cannot do. Next one please. ये हमने पैकेजिंग बनाया था. देखिए पैकेजिंग करने से क्या फायदा क्या हुआ. If you see, या previous one please. If you see this pack, this is available in Kolkata at the rate of 150 rupees per kilo. 1 kilo. इसका लाइफ कितना है? It is not closed properly. एक तो हाथ से गिरने से टूट जाएगा, पूरा गुड़ खराब हो गया. दूसरा, इट इज इलीगल पैक ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट. इट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, इट कैन नॉट बी सोल्ड. नाउ इसका दाम कितना है? 150 रुपीस पर किलो. नाउ इफ यू सी these tubes are sold in the local market वेस्ट बंगाल में at the rate of 80 rupees per 150 ग्राम. 150 ग्राम का दाम कितना है? 80 रुपया, 80 rupees. हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg? 150 into 6 कितना होता है? 900 ग्राम होता है. 9 ट्यूब लेगा तो कितना हो गया? 6 into 6 ट्यूब लेना है. 1 2 3 4 5 6 6 लेने से कितना होगा? 6 into 150, 6 plus 3 900 ग्राम. कितना दाम हो गया? 9 into 80 rupees. सॉरी 6 लिया ना, 6 into 80 कितना हो गया? 6 into 80 480 रुपया, 480 rupees. That is cost of 900 gram. अगर और 100 ग्राम 50 रुपए में पा करो, so it is coming at how much? 480 plus 50, 530. But the local market product is selling at the rate of 150 rupees per kilo. पैकिंग करने से फायदा हुआ नहीं हुआ? आपको 150 रुपए का सामान now it is selling at the rate of 530 rupees per kilo. And moreover, this product can be exported to any place, it can be transported, it is following the regulation and rules. And moreover, the shelf life जो हमने बताया था, use by date packed in the earthen pot is only 1 month, whereas this product is giving a shelf life of 12 months. They are writing 6 months, but we have tested it, it can be stored for more than 6 months. So packaging करने से आपको बिजनेस का मुनाफा बढ़ रहा है ना, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? If you do the right packaging, your profitability goes up. And why do we do business? हम बिजनेस क्यों करते हैं? आप लोग सारे बिजनेसमैन हैं ना, क्यों करते हैं बिजनेस? तो मेन टारगेट इज टू अर्न प्रॉफिट, नॉट फॉर चैरिटी. कोई चैरिटी नहीं करता. सो हमें क्या करना है? हाउ इफ वी डू बिजनेस, इफ वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट, सो वी शुड फॉलो दैट. तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, इफ यू डू द प्रॉपर पैकेजिंग, आपको प्रॉफिट बढ़ता है घटता है? बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग? एक ट्यूब
का दाम है 4 रुपया, 4 रुपीज। सो आपको 1 किलो पैक करने के लिए आपको लगेगा 6 + 1 7। 7 ट्यूब का दाम कितना हो गया? 7 into 4, how much? हाँ? 7 into 4, how much? इतना टाइम लगने से कैसे होगा यार? You are all business man, मैथमेटिक्स में से 4 कैसे चलेगा? हाँ? है ना? हाँ? 7 into 4, how much? 28 rupees. You should answer before I ask. हाँ? So 28 rupees cost of packaging. Product का दाम कितना है? I told 150 rupees. So 150 plus 28, how much? अरे यार, 150 plus 28, 178 rupees. 178 rupees आपको cost है. And what is the selling price? हम बताया 530 rupees. Profit बढ़ा नहीं बढ़ा? है ना? Another example, yeah, next slide please. Yeah, ऐसा जो आप विश्व बंगला में जाएंगे ना, you will find this tube. वही सेम है, but इसको कलर चेंज हो गया because this is a different brand वो बिक्री कर रहा है, विश्व बंगला लोगो लगा के. Yeah, next one. This is another innovative packaging. See, देखिए गिफ्ट पैक. एक पैकेट के अंदर 6 ट्यूब लगा दिया और इसे पकड़ने के भी दे दिया. So you can gift it to anybody. है ना? हाँ? It is now inside the विश्व बंगला आपको अगर एयरपोर्ट में खरीदना है 100 ग्राम का दाम है 80 रुपीस. इन लोकल में बोला 150 ग्राम, बट इन एयरपोर्ट में टैक्स करता है ना, ज्यादा है. एंड यू नो दैट इन पैकेजिंग वी टेल, नॉट इन पैकेजिंग, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट देयर आर 4 P's. These are called the 4 P's of the marketing management: product, place, price, promotion. These 4 P's are very very important and crucial. If you do any business, आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले you must study these 4 P's. These are called the मूल मंत्र of marketing management. Not only the मूल मंत्र of marketing management is a business. आपको कोई भी बिजनेस करना है तो ये 4 P को आपको अच्छा से अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा. And as for the second P, that is the price. Price is a dynamic. Price is always changing with the change of place. Same product, if it is changing the place, the price will change. अब देखिएगा कोई भी सामान का आप देखिएगा. If just take example of water bottle. ये पानी का बोतल जो हमको मिलता है ना, 1 लीटर का दाम कितना है इधर शिलांग में? हाँ? 20 रुपीस. 2 लीटर का कितना है? 30 रुपीस. 5 लीटर का कितना दाम है? हाँ? 50 रुपीस. Does it follow any formula? 1 लीटर का 20 है तो 2 लीटर का 40 होना चाहिए ना, 5 लीटर का 100 होना चाहिए. First of all, formula breaks. I am talking about the place. ना, place बता रहा हूँ. Place, if you see, आप if you want to buy this 1 liter bottle, आप इधर से 5 रुपए जाओ, 5 रुपए खाना खाओ. खाना खाने के बाद आप पानी का बोतल का दाम कितना लेगा? 20 रुपए में मिलता है. Same water bottle, if you are traveling by Indigo from Shillong airport to Kolkata airport, आपको बहुत प्यास लगा. If you want to buy a water bottle inside the Indigo airline, 1 लीटर का दाम कितना लेगा? हाँ? 1 liter will be more than 100 rupees. Change of place, always change of price. है ना? हर चीज में आप देखिएगा, any सामान, same product is selling at different place, the price is different. तो जो सामान आप शिलंग में बना रहा है, whatever the price, if you sell it to other place, the price will change. इसमें भी देखिए, हमने बता रहा था ना, वो ये वाला जो है, वो कलकत्ता में बिक्री करता है 80 रुपया for 150 ग्राम, and it is selling inside the airport. कलकत्ता में ही है, inside the airport. So the price of this product is 80 rupees for 100 gram. That is 800 rupees per kilo. Yeah, next slide please. Yeah, so as I told you, this is a cottage industry. गांव में don't know to pack, how to pack, and what is the packaging material. उसको machine कितना होगा? Yesterday, you know that honorable CM was talking in the speech. कि he should develop a common facility center. The person who is doing the business, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन नहीं है पैक करने के लिए. So you can use the machine at a common center. आपको यूज करने का पैसा देना है. मशीन का दाम 10 लाख रुपया है. You cannot invest 10 lakh rupees. आपके पास पैसा नहीं है. So you go to the common facility, you use this machine and pay a nominal charge. So the same thing has been adopted in West Bengal, and we are the
basic project manufacturer. We are the PMC of this product. Project management consultant, वो IAP ने काम किया था. We make the DPR, that is called detailed project report, to make this common production center of knowledge good. ये common production center है because the farmer लोग को जानकारी नहीं है how to pack, how to produce. So government of West Bengal has paid 3.5 crore. 3.5 crore rupees खर्चा करके the building manufactured building बनाया. Then अंदर में packaging machine लगा दिया. Then they have made the laboratory where the good has to be tested, and then packaging materials, everything is provided by the government, and now it is under the operation of these farmers who are using this. But government has created the infrastructure, it has given to the community. But individual people approach करने से तो नहीं होगा. Government will give to a society, to a cluster. So it is a common production center where the good is manufactured, it is tested, and it is packed. The facility has been created by the government of West Bengal with the help of government of India. They have got the funding, almost 4.5 crore is the total expenditure which is being paid by the government. Yeah, next one please. Next. Another example of packaging, how it increase the profitability. Because हम business में करते हैं profit कमाने के लिए. Profit कमाना पड़ेगा. This is what अब जानते हैं ना, this is salt. अब खाया है salt, खाया ना वो खाया है ना? बड़े-बड़े होटल में रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टेबल के ऊपर यही salt मिलेगा आपको, है ना? This is a catch brand of salt which is manufactured by a company called Dharampal Shatapal, DS Group, who also manufacture रजनीगंधा पान मसाला. बहुत लोग खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं, तो वो कौन बनाता है? रजनीगंधा. वो बनाता है सेम कंपनी, है ना? ये धर्मपाल शतपाल. नेक्स्ट वन प्लीज. ये नमक का नेक्स्ट वन. ये जो नमक है ये भी तो लेते हैं ना हम लोग, घर में तो यही नमक से खाना बनाता है, वो वाला नहीं खरीदता है. क्यों? क्योंकि वो महंगा है ना? सो यू नो सेम सॉल्ट में कुछ क्वालिटी फर्क होता है क्या अलग अलग कंपनी के लेने से? सॉल्ट में कुछ है? No aromatic, nothing is there. Salt is only salty, and salt is a product सब लोगों को चाहिए. Without salt you cannot take food. आप बोलिए ना बड़ा-बड़ा होटल से आदमी लाइए, कुक लाइए, बोले बिना नमक का खाना बना के खिलाओ तो कैसे रहेगा? पाइन को बोलिए बड़ा से कुक है वो, आओ खाना बना के दिखाओ. Without salt you cannot taste. Salt तो सबको चाहिए. Now you see the ordinary salt made by Tata, ये 2 साल का पुराना पैकेट है, 2020 का है, उस टाइम 20 रुपीस था. अभी कितना है सॉल्ट का प्राइस? एमआरपी शिलोंग में कलकत्ता में वी गेट 25 रुपीस एमआरपी, बट हम लोग 22 रुपए में खरीदते हैं, 22 रुपीस लेता है. यहाँ पे ज्यादा लगेगा बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोर, एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात. गुजरात से आता होगा ना इधर. 25 रुपीस होगा. 25 रुपया 1 किलो नमक का दाम है, करेक्ट? पैक्ड इन ए प्लास्टिक पाउच. नाउ गो अर्लियर, पहले जाइए प्लीज, चेंज टू प्रीवियस स्लाइड, 2 स्लाइड पहले. This salt 1 kg is selling at the rate of 25 rupees per kilo. Correct? You go to the earlier one. Previous slide, Mark. Alright, one more. Yeah. Now this salt, what is the price? Do you know that? कभी देखा इधर क्या लिखा है दाम? No. This is 200 gram container is MRP retail as 35 rupees. For 200 gram MRP is 35 rupees. So 1 kg how much? जल्दी बताइए, मैथमेटिक्स करना है आप लोगों को, बिजनेस कैसे करेगा? 35 into 5, how much? 175. मेरे से जल्दी बोलना चाहिए, ये लोग बिजनेस करते हैं, दुकानदार में दुकान लाइन लग गया, जल्दी ऐसे करने से तो होगा नहीं. आप काम करके बोलना है, हाँ इतना होगा, जाओ पैसा दो जाओ. आप बोलेगा हाँ रुका था, कैलकुलेटर निकालता है, मोबाइल निकालता है, कस्टमर चला जाएगा. Nowadays people are very hurry, किसके पास टाइम नहीं है. Always people are running. बड़ा-बड़ा शहर में इधर में तो ठीक है, आप लोग आराम से चलते हैं, लाइन चलते हैं. और बड़ा-बड़ा शहर में जाए लोग पैदल भी नहीं जाता है, भाग के जाता है. अब जाइएगा हावड़ा स्टेशन को भी देखिएगा, सियालदह स्टेशन देखा, लोग दौड़ रहा है. People don't have time. Everybody is busy. Time is money. Time is money. Time जितना आपको बचाएगा उतना पैसा आप कमाएगा, है ना? So it is costing at 35 into 5 means 175 rupees. Same salt, when it's packed in a different packaging, is costing 175 rupees. आप अगर टाटा का नमक खरीद के हम इसमें पैक करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? टाटा से लेगा 20 रुपया किलो में बल्क में, इसी डब्बा में डालेगा, हम बोलेगा 30 रुपया, 35 नहीं 30 रुपये में बिक्री करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा? You know, that is the technique of business. So पैकेजिंग करने से आपको क्या प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ?
बराबर, and it is more comfortable. वो नमक में क्या है, काटेगा, फिर डब्बा में डालना पड़ेगा, चम्मच से निकालना पड़ेगा, कितना तकलीफ है. And this is, you open this cover, उसके बाद ऐसा है, you turn this, ये परफोरेशन आएगा, लगाने से गिर जाएगा. Again you close this, यहाँ पे लगा देने से बंद हो गया. No air also will go inside. This is very comfortable. Customer ऐसे मांगता है. They are buying this. So customer is least bothered to pay you more for their comfort. Everybody wants now comfort. सबको comfort चाहिए. You know, everybody. And we are ready to pay any amount. Everybody, कई जगह में आप जाओ, people are more desirous for the comfort zone. पैसा सबके पास है आजकल. Nobody is begging. सबके पास पैसा है. But we want to spend this money for more and more comfort. Comfort चाहिए. तो ये comfortable pack है. कुछ नहीं चाहिए. No wastage of spoon. कुछ नहीं चाहिए. Just shake it. The salt will come. But इन आपका profit बढ़ा ना. Buy 20 rupees, sell at 175 rupees. Packaging करने से profit बढ़ा कि नहीं बढ़ा? And it also a respect for the packaging. Packaging creates a brand. Packaging creates a respect for the product. है ना? अगर देखिएगा, I'm just telling one thing कि how to make a respect of anything. Say if I want to come here, अगर हम ऐसे चप्पल पहन के आता, लुंगी पहन के आता, will you listen to me? आप मेरे बात सुनेगा क्या? अरे पागल है क्या बोलेगा पैकेजिंग? You got it? So everybody is looking for some brand. है ना? हम चप्पल पहन के आएगा, फटा कपड़ा पहन के आएगा, nobody look at me. So we also have to create a respect for the product. Product का respect कैसे होगा? You have to create a good packaging. Then only the people will look, अरे ये तो अच्छा packaging है, so इसका सामान भी अच्छा होगा. So packaging creates a respect. It builds up a image for the product. You have to get that. नहीं तो आप कितना भी अच्छा सामान बनाएगा यार मेघालय में बैठ के आपका सामान बिक्री नहीं होगा. Because the people are not respecting you. You have to generate the respect. उसके लिए आपको अच्छा से अच्छा कपड़ा उसको देना पड़ेगा, है ना? देखिए हम बोलते हैं लेडीज लोग they use lot of cosmetics. बुरा मत बनेगा आप लोग, लगता है ना? लिपस्टिक लगाएगा, फेस पाउडर लगाएगा, क्या क्या लगाएगा, टेप लगाएगा, वो लगाएगा. You use lot of cosmetics and spending money also. क्यों लगाता है cosmetics? हाँ? So you want to get the attraction of other people towards you. आपको जरा देखना चाहिए. और लड़का जा रहा है, देखो ये मैडम को बहुत सुंदर लगता है. Everybody having a intention in the mind कि सब लोग मेरे तरफ देखें, सब लोग मेरे को अच्छा बोले, है ना? Everybody have that tendency. So when we do the business, we also want that our products should be looked by everyone. है ना? उसको भी सजाना पड़ेगा, उसको लिपस्टिक लगाओ, है ना? उसको अच्छा अच्छा कपड़ा दो. So that is packaging. वो कौन करेगा? So for your product, the attraction will be created by this packaging. So आपको अच्छा पैकेजिंग करने से क्या होगा? आपका प्रोडक्ट के ऊपर लोग दिखेगा. They will create a respect for the product. A brand has to be built. How to build this? For building a brand, building a respect for the product you manufacture, you need a attractive, beautiful, good looking, whatever adjective you put on packaging. आपको पैकेजिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, है ना? तो अदरवाइज लोग दिखेगा नहीं, बोले यार कोई जा रहा है चलो. It has to be created a respect, है ना? तो you have to do that. Otherwise आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा. I will show some other example also. Right, चलो आगे, भाई. Next one, please. Now this is a scenario of the packaging industry globally. You see that packaging is one of the largest industry in the globe. It is considered to be 10th largest industry across the globe. Packaging industry का global value is southern. ये तो हमारा काम का नहीं है. It is employing more than 6 million people. 6 million के ऊपर लोग they are surviving on the packaging industry. Their job रोटी रोजी packaging के ऊपर में है ना? There are more than 1 lakh companies across the globe worldwide. Asia Pacific region packaging is called the third largest industry. India, China, and all these South Asian countries, packaging is one of the third largest industry in the market. Yeah, next one, please. Now you see, this is another example. We India have using currently very low packaging. हम लोग तो ज़्यादा बिना packaging का सामान खरीदता है. As a result, the consumption, that is per capita consumption of packaging in India is still very low, 10.5 kg. एक आदमी एक साल में 10.5 किलो पैकेजिंग हम फेंक देता है. We are buying the product and the packaging is thrown in that product, उसके ना. तो हम कितना कर रहे हैं? Only 10.5 kg
per person. Whereas you see Germany 42, US में 109 kg. They are using anything or everything they buy from the market is a pack. तो इसलिए उसको पैकेजिंग का waste ज़्यादा है. We are still in the safer side, but we are having the highest population. 150 करोड़, 150 crore population into 10.5 करेगा तो it is more than that other countries. Okay, yeah, next one please. Yeah, this is the example what I was talking about the natural packaging. This is example of Arunachal Pradesh, rowing, Dambuk. You know Dambuk, their orange has got a GI tag. GI is another indication, that is ornament for the product. GI tag product, which are very good, very sweet, very juicy, but they don't have any scientific packaging. They are packing with this bamboo basket. In Arunachal, I got this sample from photograph from there. Yeah, next one please, bamboo basket. Now, along with the NECBDC, Northeast Cane and Bamboo Development Council, after crossing Barneyhat, there is a institute. Earlier नाम था CBTC, Cane and Bamboo Training Center. Now it is called as NECBDC, Northeast Cane and Bamboo Development Council. With them, we have tried to develop a packaging material for the northeastern states. That is from the bamboo. Bamboo से लेके we used to make this type of crates, which will help the northeastern country states to send their goods to the mainland. So हमने ये bamboo design किया था, bamboo crate. तो उसमें आप लोग fruits and vegetables can be packed. Yeah, next one. Yeah, this is developed for, there is an organization in Shillong. Now it is closed. You might be knowing that is called NERLP, NERLP, Northeast Rural Livelihood Mission Project. It was a World Bank funded project, but the funding is closed and now the organization also closed. उनके लिए हमने काम किया था to design a packaging for pineapple for the northeastern states. कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई साइंटिफिक पैकेजिंग कंपनी नहीं है, तो हम लोग इधर का लोकल पैकेजिंग में ये पैक करके बाहर में बेच सकता है, ऐसा वाला पैकेजिंग डिजाइन किया था फॉर पैकेजिंग ऑफ पाइनएप्पल. यहाँ पे लॉट ऑफ बैम्बूज आर ग्रोइंग इन द हिल्स, ऑल द स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट, लॉट ऑफ बैम्बूज आर देयर. सो बैम्बू हैज टू बी स्ट्रिप्ड एंड उसको ये क्रेट बना के उसके अंदर में वी कैन डू द पाइनएप्पल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट वन प्लीज. अलग-अलग डिजाइन कुछ बनाया था, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, you know. This is the scientific packaging suggested for the Arunachal Pradesh not to use the bamboo. They can use this type of boxes, corrugated boxes for packaging of oranges made up of paper. Next one please. This is another example in West Bengal. आप देखो ये 3 चक्का वाला साइकिल है ना, the van, cycle van which is 3 wheel. उसके ऊपर में they are taking this tomatoes in the market. इसके ऊपर कितना almost 1.5 ton tomatoes है. आप सोचिएगा जो टोमेटो इधर है और जो टोमेटो इधर है, वो मार्केट जाते हुए इसका हालत क्या होगा? Without any machine, they have converted to juice. बिना मशीन में जूस बन गया. अच्छा है ना? जूसा नहीं लगा, जूसा नहीं लगा, करंट भी नहीं फूटता है ना? So these farmers are not getting price for that. उसके लिए we has to work. We have designed a packaging for sending this tomato. ये this is a place in सिलीगुड़ी से थोड़ा नजदीक है. That is called हल्दीबारी. Haldibari is close to the Bengal and Bangladesh border. It is a border area where a huge quantity of tomatoes are grown, and these tomatoes throughout the country are sent from Haldibari. And tomatoes also, Haldibari tomato also reaching to Pakistan from the Wagah border, because the Punjab से लॉरी आता है, वो टोमेटो लेके चला जाता है पंजाब, and through Punjab it is going to Pakistan also. इतना टोमेटो हमें grow होता है, and these tomatoes are mostly damaging by this unscientific packaging. उनको भी हमने सिखाया कि भाई use this crate. Plastic crate या तो bamboo crate use करो and take this tomato to the market. Yeah, next one please. This is the example of pineapple packaging. What we did for the NERLP, we have packed the pineapple in a micro perforated breathable film. ये जो film दिख रहा है इसके अंदर छोटा-छोटा holes है. Through the hole, because any fruits and vegetables they need oxygen gas. जैसा हम बिना ऑक्सीजन का मर जाएंगे ना दम घुट के. We need oxygen also for the crops and vegetables and fruits. So ऑक्सीजन जाने के लिए there are small holes. और ये लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जाएगा अंदर, देन सांस लेगा, एंड whenever we release the gas, आप देखिएगा जो भी हम छोड़ता है, we release the hot, गर्म छोड़ता है ना, we are releasing the hot air and with carbon dioxide. तो अंदर में क्या होगा, they are releasing carbon dioxide and गर्म छोड़ता है. तो that is the reason pineapple storage आपको it has to be done in a cold temperature. 12 से 15 डिग्री के अंदर में रखना चाहिए, otherwise it will get spoiled. And carbon dioxide बाहर चला जाएगा this perforation से. And then next one. We pack these pineapples in a corrugated boxes like this. So these also having a ventilation. Through that the cold air and oxygen will go inside and CO2 will come out, and this product can be stored for 2 to 3 months if it is stored at 12 degrees centigrade. 12 degree में रहेगा. Otherwise
it can stay in this type of packaging for 25 to 30 days. By the time it can reach to the Gulf and other country, but बाहर नहीं जाएगा. So for export purpose to the Gulf country, this type of boxes can be used. Next one please. The same pineapple we kept in the horizontal position also. This is a vertically placed, है ना? दूसरा पैकेट में हम horizontally रखा था. Next one please. This is the same packaging but with a lesser space. So इसका दाम भी कम होगा because area कम है ना? And we kept this pineapple here in the horizontal one. Yeah, next one. Now, based on the function of packaging, packaging can be classified into 3 or more categories like primary packaging, secondary packaging, and tertiary packaging. Next one, please. Primary packaging क्या होता है? Primary packaging means the first packaging around any product. कोई भी product का जो first packaging है, that is called primary packaging. Like say, this is a medicine. It is stored in a glass bottle. So that is the first packaging around the product. So this is called as a primary packaging. Packaging for the primary packaging is termed as secondary packaging, and packaging for the secondary packaging is termed as tertiary packaging, or इसको बोलता है transport packaging. Why transport packaging? Because the product will be getting transported from one place to another place by this packaging. जिस packaging में हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसको बोलता है transport packaging. So transport packaging should be more sturdy, more strong, because otherwise when you send in a lorry or container, it's shaking, na jacking होता है, झांकी लगता है, stacking होता है, so it gets damages. So transport packaging must be more strong. Next one, please. This is another example where you can see the primary, secondary, and tertiary packaging. Say this is a bin, green piece packed in a metal container, as I told you, metal container, and this is now connected with a easy open peel. It is called EOE cap. ये ढकना कैसे खुलेगा? ये उंगली लगा के इसको खींचने से पूरा ढक्कन खुल जाता है ना? Then for closing there is a plastic cap they are giving. Dual closure, दो कैप है. ये कैप खोलने से बंद नहीं कर सकता. उसको बंद करने के लिए they are giving one plastic closure. है ना? जैसे टोमेटो केचप का बोतल में देखिए, कितना ढक्कन है? टोमेटो केचप बोतल में दो क्लोजर है. ऊपर में प्लास्टिक क्लोजर है, वो खोल के नीचे जाएगा तो there is a metal closure. मेटल क्लोजर अगर खोल दिया तो we cannot refix. वो दोबारा नहीं लगा सकता. उसके लिए बंद करने के लिए ऊपर में प्लास्टिक क्लोजर दिया है जो बंद होता है. Because ये क्लोजर देने से क्या होगा? अगर लोहे का क्लोजर नहीं देता तो क्या होगा? Why we require two closure? नहीं तो दुकानदार क्या करेगा? उसमें से आधा टोमेटो केचप निकाल देगा. निकाल के उसमें आप जानते हैं ना मिष्टी कुमड़ा बोलते हैं ना पंपकिन को क्रश करके पानी डाल के उसमें डाल दो. आधा से और एक बोतल बना लो. So to protect this customer को प्रोटेक्शन देने के लिए पैकेजिंग इज आल्सो वर्किंग. So they have designed a cap. एक कैप खोलना है, अगर लोहे का कैप खोल दिया उसको दोबारा नहीं लगा सकता. So there is no question that दुकानदार दो नंबर ही करेगा, है ना? So to protect this customer from the packaging is also functioning, है ना? तो इसमें भी ऐसे है. Once you open this closure, अगर ये closure खोल दिया खींच के, then you cannot refix this. दोबारा नहीं बंद होगा. So they cannot do any दो नंबर का धंधा. तो इसको बंद करने के लिए there is a plastic closure दिया. And when this packed in further packaging, तो इसको बोलते हैं secondary packaging. And then this packaging ऐसा वाला दो बॉक्सेस के अंदर डाल दिया. So इसको बोलते हैं tertiary packaging. So these are called as a different levels of packaging. हम जितना प्रोडक्ट को जितना दूर भेजना है, उतना ज्यादा पैकिंग करना पड़ेगा. Because it requires for protecting the product. Next one please. Now you see based on the consumer, हमने बताया ये these are the packaging for the function of packaging. Now based on the consumer मतलब क्रेता या तो ग्राहक. Depending upon the consumer, packaging can be classified into 3 categories. What are they? The first packaging is called consumer pack. Consumer किसको बोलते हैं? Who are consumer? End customer. We are all consumer. आम आदमी, आम क्रेता, है ना? End customer is the consumer. So the packaging which is made for the end customer is called consumer pack. And based on the definition, consumer pack must be जो मैंने बताया था अभी उसको ब्यूटीफाई करना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा. अदरवाइज इट विल नॉट कम इन द लुक ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर दिखेगा नहीं. कंज्यूमर को दिखाने के लिए होना चाहिए ना, पैकेजिंग को अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा कपड़ा देना पड़ेगा, उसको लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, कॉस्मेटिक्स लगाना पड़ेगा, तो सुंदर लगेगा, तो आदमी को नजर में आना चाहिए ना. So packaging, consumer packaging must be beautiful, must be good looking, must be attractive, must be colorful. All the adjectives you have to add with the consumer pack. जो भी हम consumer pack बनाते हैं, we must make it a very very attractive look. Otherwise, it will not be visible by the consumer when they go to the shop. I'll show you in this picture. Bulk packaging, what is that? Bulk packaging मतलब
एक ही कंटेनर में ज्यादा परिमाण क्वांटिटी जो भी आएगा। और प्लीज बैक एक स्लाइड बैक करिए। नाउ दिस इज ए कंज्यूमर पैक, गॉट इट? नाउ दिस इज ए बल्क पैकेजिंग। When inside the packaging, lot of consumer pack are there inside. That is called bulk pack. ये bulk pack कहाँ से आएगा? It will go to the retailer. It will go to the shop. Yeah, next one please. So this is called bulk packaging, and one more packaging is called industrial packaging. Industrial packaging is for industrial purpose. यहाँ पे देखिए एक बहुत सारा मशीन आया ना, एग्जीबिशन में देखा होगा, वो ड्रायर अगर आया, वो ड्रायर को पैक करेगा तो कैसे बोलेंगे उसको? That packaging we call as an industrial pack. It is coming from a Kerala company who are manufacturing this dryer and to someone in a Meghalaya. So they are packing in a wooden box. That packaging is called industrial packaging. That is an industrial product. Packaging of the industrial product or for other manufacturer is called as an industrial pack. Next one. Consumer packaging जो मैंने बताया था. So it is basically should be visible. Next one please. Next slide. Now ये देखिए, if we do not make your product visible, it is a picture of any shopping mall. बिग बाजार का एक पिक्चर है. आप अगर उसको सुंदर नहीं बनाया, लिपस्टिक नहीं लगाया, कॉस्मेटिक्स नहीं लगाया, कैसे मालूम पड़ेगा आपको प्रोडक्ट कहाँ है? You got it? When the consumer go to a shopping mall for buying, यहाँ से वो दिखना चाहिए यार, वो मेरे को बुला रहा है ना? देखा आपने रास्ते में कोई लड़का लोग अच्छा लड़की जाएगा अधिक होती उसको तरफ देखता है कि नहीं देखता है? बोलिए ऐसा होना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको वो दिखना चाहिए कि आई वांट दिस प्रोडक्ट. इट इज अ शॉपिंग मॉल का एक शेल्फ है. सो योर प्रोडक्ट शुड बी विजिबल हियर. यू हैव टू मेक दिस ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मींस ऑफ द पैकेजिंग. पैकेजिंग अच्छा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट इसमें नजर नहीं आएगा, है ना? बिकॉज नाउअडेज पीपल प्रेफर टू बाय द product from a mall. Nobody likes to go to kirana shop and take the product. है? हम लोग कोई नहीं पसंद करता है दुकान में जाके सामान खरीदने का. Everybody wants to buy from a mall. Star Bazaar, Big Bazaar, City Center, all these people are visiting there because you can go comfortably. अंदर में AC लगा हुआ है, आप जाइए कितना देर बैठे बातें करिए. दुकान में जाएगा लाइन लगा के, हाँ क्या चाहिए? हाँ वो दो, वो सामान नहीं है दूसरा दो. ऐसा है ना? दुकान में आप जाके दूसरा सामान पूछेगा वो नहीं देगा. दुकानदार क्या करता है? हमेशा दुकानदार क्या करेगा? जो सामान आप नहीं मांगते वो देगा आपको. करता है कि नहीं? बिकॉज जितने उसका प्रॉफिट ज्यादा है. आप दुकान में जाके पूछिएगा आई वांट ए सनफ्लावर ऑयल, मिलता है? मोस्ट ऑफ द शॉप विल टेल यू सनफ्लावर नहीं है, सप्लाई नहीं है, उसको बंद हो गया. यू टेक दिस लोकल, यू नो, बोलेगा ये लो, क्या होता है कलकत्ता में एक ब्रांड है बहुत फेमस, गणेश का ले लो, ये 130 रुपए दाम कम है, उससे अच्छा है. बिकॉज दुकानदार गणेश का तेल बिक्री करेगा 130 रुपया में, उसको 10 रुपया प्रॉफिट मिलता है. सेलिंग प्राइस 130 एंड उसका बाइंग प्राइस 120 रुपया, 10 रुपया प्रॉफिट मिलता है. एंड इफ द शॉपकीपर सेल यू द सनफ्लावर ऑयल एट द रेट ऑफ 150 रुपीस, 150 रुपए में बिक्री करने से उसको 2 रुपये मिलेगा. 148 इज द बाइंग प्राइस फॉर द शॉपकीपर, 2 रुपीस इज द मार्जिन. तो दुकानदार को क्या करेगा? जिसमें बिजनेस क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट जिसमें ज्यादा है वही सामान आपको देगा ना. आप दुकान में पूछिए आई वांट ए पैंटीन शैम्पू, वो बोलेगा कहां मैडम पैंटीन ढूंढ के आया, पैंटीन इधर आता ही नहीं इस्लाम में. ओ आप लीजिए क्लिनिक प्लस है ना? बिकॉज दिस ब्रांड वेयर द मार्जिन इज लो, दैट विल नॉट मूव इन द शॉपकीपर देगा नहीं. सो कस्टमर्स दे आर मोर प्रेफर टू गो टू द मॉल में जाके हम इधर से ढूंढ के निकालेगा हमारा प्रोडक्ट, है ना? या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे देखिए, है ना कितना ब्रांड है. तो इसमें हमारा ब्रांड जो वी वांट टू मेक इट, वी हैव टू मेक द ब्रांड विजिबल. अदरवाइज इफ इट इज नॉट विजिबल, कस्टमर विल नॉट बाय. We have to make the product more visible by doing the beautification in the packaging. Next one please. How much time? Next one please. Yes. Okay. This next one please. Yeah, this is called the bulk packaging. Bulk packaging मतलब जो बताया मैंने, एक ही पैकेज में ज्यादा क्वांटिटी है. So this is a चाय का देखिए, ये 20 किलो का चाय है. We not buy. It is not a consumer pack. It will be purchased by the hotel, restaurant or company. So this is called as a bulk packaging. Next one. This is a tea, say Sri tea. These are called bulk packaging. एक पेपर बैग में 32 kg चाय है. This is not a consumer pack. So bulk packaging does not require beautification because this is a demand, on demand आएगा.
वो कंपनी को चाय पैक करना है, they will ask the tea कि मेरे को 200 किलो चाय भेजिए, मेरे 500 किलो चाय भेजिए. This is on demand. So this does not require any beautification. Bulk packaging does not require any beautification. As per the only thing is that as per the law, whatever the information to be written, that is to be printed on the back. Nothing else. The next one, please. Slides. This is some bulk packaging of chemicals. इसको बोलता है rigid IBC, intermediate bulk containers. Each can contain 1000 liter. 1000 लीटर सामान इसमें आ सकता है. या next one. Next. These are also example of a bulk packaging. देखिए bulk packaging में beautification जरूरत नहीं है, because these are on demand. है? So these will be taken by the companies where automatically order comes to the company. One company to another company they are going to supply. So this is for industrial application, industrial purpose. Next one. Next one. This is an industrial packaging example. Next one. Now these are the different levels of packaging. I told only primary, secondary, tertiary, quaternary, quaternary and hexary. And previously, please previous slide. अभी इसमें आप लोग बताइए. I am just asking one question and ending my session. आप लोग अगर समझे होगा तो you will be able to answer right. हम चाहते हैं कि आप लोग समझा कि नहीं समझा. ये क्वेश्चन से हम आपको प्रमाण करेगा कि आप लोग समझा कि नहीं समझा. अभी मेरे को बताइए. These are the different levels of packaging. ये प्रोडक्ट क्या है? समझ में आया? This is a photographic film. अभी का जमाने में इसे outdated technology because this camera does not require any reel. Now it is a digital. It requires a hard drive or a pen drive जिसमें डाटा जमा होता है. पहले का जमाने में था ना reel होता, reel negative. तो इसमें अगर हम दुकान से खरीदने जाता है, if I want to buy a reel, I will buy from a studio or from a shop. That is called consumer pack. अभी इसमें बताइए तो what is the consumer pack in among all these 6 pack? यहाँ पे 6 packaging है. Out of all this pack, what is the consumer pack? What we will buy from the studio? ये वाला. Tertiary ना, we buy from the shop. कौन सा खरीदता है? This is nothing is written. Somebody told secondary, it's wrong. We have to buy from this. ये खरीदा है ना, उसमें सारे कंपनी का नाम लिखा है. फुजी, कोडाक, कनिका जो भी होगा, एमआरपी कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज द ऑल दिस थिंग्स विल बी रिटन हियर. सो दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर पैक. कंज्यूमर पैक में सब कलरफुल है. इसमें देखिए कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है. वहां से दिस आर ऑल ब्यूटिफिकेशन हैज बीन डन, है ना. सो आई थिंक देयर आर मेनी स्लाइड्स. हम बोलेगा तो रात 10 बज जाएगा. अदर स्लाइड्स पीपल आर वेटिंग. ओके, सो लेट अस क्लोज द सेशन. ये जो बोल रहा था आपको, now the fifth P is called packaging. In marketing management, earlier there was 4P, product, place, price and promotion, but the fifth P is called packaging. It is now the recent marketing concept. Without packaging, you cannot sell the product. Fifth P is termed as the packaging, which is called the fifth P of the marketing management. Thank you, bye. Thank you so much, Mr. Vidhan. I think that was a really interesting session, and I hope all of us must feel the same. I think this is one of the most exciting, energetic, and lively sessions. I think we've learned a lot about the importance of packaging and the different types of packaging. And I hope the entrepreneurs that are present here today can apply what they have learned from the session today. Coming back to the feedback session, I would like to request the team to kindly do the needful. We are back to our feedback session, so all of you be ready with your phones. So we come now. So as they are still, fixing this, I would like to thank Mr. Vidhan for actually taking time out to be part of this event and for taking up the session. We are privileged to have you here. Thank you so much, sir. And yes, so we always take a feedback after every session. Oh, okay. So you'll get a live feedback from the audience today. Oh, very good. So are you guys ready? Yes. Very good. Now let's go for it. So take out your cell phones, go to menti.com, put in the code. We've seen 11, 12 people have gotten in. What happened to the others? Closer.
It's your cell phone today. Yes. 15, 16, 17, 18, 19. We could start. Okay, let's. Are we ready now? Yes. Great. So, how did you like the workshop? You all had great fun laughing also. So now, how did all of you like the workshop? Kuno kaya small spanko ko workshop nanta. Yung workshop ta o ang kahunet, yung mga tao ang program may nakilid ka. So it looks like this session everyone is really happy. Now, should we move on to the next? Next. Yeah, let's move on. Now, what inspired you the most about the workshop? The session just now. What inspired you? Okay, kabayan, hindi na kanina session balagat ng tan. You have to talk, Mom. You have to share talk. Tan sigentin, akentin. Sigitan yan. Clarity, energetic, fun. I think I also feel, I really feel the same. I felt energized, fun, very interesting. Yes, it was a very interesting session. Knowledge, you guys have gained a lot of knowledge. Very nice. I like teaching. I really like your teaching, so thank you. Okay. Confidence, energy. Somebody have written in Khasi the different types of packaging. Forgetting a lot of knowledge also, forgetting a lot of knowledge and tips. Upbeat. Some have gotten new ideas actually. Awareness about importance of packaging, very nice. Speaker energy, informative, nice, very good. Okay, so I think the 4 P's, actually there's a 5th P, you left out packaging. The 4 P's plus 1 more P, that is packaging. Now the next question, how will you apply what you have learned? Kung no fin, pinongkam ya ka ay maglayo din kay mentan haka business jong pisya. Daw yan je may dikit ako magkangsi na so ni business so may dikit sakana na din may dikit apply ka gid. Ako kapatid. Kung no pinya pinongkam, thotang sikantin atuntin. Kaka mong saro mong ganit siya tayo. Brilliant teaching, interested, practice it, potential partnership in future ventures, very nice. Improve on existing packaging, very nice. Somebody in Khasi also have written that he will improve and improve on it. We are doing business, not charity. Let's move on. Very nice. So some have said they'll try to give more attention on packaging, current packaging, how product, and try scientific packaging, try to adopt good packaging system and methods. We'll cover our products with the best dress. I like that. We'll cover our products with the best dress. And you forgot to mention best dress and makeup. Got a new idea on packaging. Okay, scientific method, find the best packaging for my products. Very nice to actually try to improve on the packaging. Practice it. Somebody said to apply lipstick. Okay, very nice. Okay, so we'll move on to the next question now. Next question. Now, what can we improve on for the next time? What should we improve? Kunong in kapan mahasisyo ya kung kanina session. Magkangsi may kinambatat na sutunod again. Yan daw option. So they all love the energy. It's actually facing energy.
Okay. So basic energy, other facilitation, other three, and materials. Language. Oh, they love your language a lot. This is the first session, I think. No? This is the first session that we have gotten language as one of the strongest things. So, hats off to Mr. Bidhan. So, big round of applause. Now, any other thoughts or suggestions for us? Do come next time. We will definitely invite him for the next time. And we hope to see you also next time, no? Need more speaker like you, maybe. Keep it up. Get a speaker like him. Very good. Okay? But I hope we see you guys when we get him. That is very important also. Nice presentation. Okay. Namin Nick job. What is Namin Nick job? Very interesting. Very interesting. Namin Nick job. Okay. I hope I'm pronouncing that right. Reminds me of my favorite teacher. Oh, that is very sweet. I listen from heart. That is really touching. Demonstration, inspiring. Get dressed like, good dress like package. Okay. Good dressing like a package, maybe. That's, I don't know. Better late than never. Then, I like this fellow. I never liked this. Earlier, Baler Bha, no sleepy this session. Okay. Even though after the lunch, it was very difficult. yeah, after lunch you made it interesting. It was a very difficult task. Impressive, superb session. Product. Okay, nice voice. Okay. Yeah, I saw that no sleeping in the session. So thank you so much, everyone. In fact, we have to thank Mr. Bidhan because after lunch, I think all of us were feeling sleepy. More than that, itu ayat Fatiha, Indri Dambok, Isa, Ilashim, yang session kita berkom, lawan benda, kita energy, kita di kamera, tinggi ayat Isa, ayat biru. Thank you so much, all. We will start the next session immediately. So whatever you need, your tea or water, please bring. Kami terbuka auditorium. Dan kita akan ship kerja ini, warna ini, or kita asam syah ini, dengan yang show, instant by the session ini. So thank you, Mr. Bihar. Thank you all. Thank you. If they have want to connect with you ever. Yeah, I give my number. I think you can note it to my WhatsApp number. Okay, we will share with all of you. They are all in a group. We will share. Share it. Yeah, we will share Sir's number in case you want to get in touch with Sir. Lalaki ko apanya contact Isa, hadir nabot alor ke packaging ni sa hak number. You can note it down. Yeah, 8240. Okay. 8240. 8240 248 723. 723. I repeat, 8240 248 723. This is my WhatsApp number. Thank you. I think we will.
So very good afternoon once again to all of you. We shall start with the next session. We had a wonderful session prior to this. All of you enjoyed the session. We hope you enjoy the session for this also. So now the session is on importance of water management and soil sensing technology for sustainable and climate resilient Indian agriculture. Water management and soil sensing technology play pivotal roles in ensuring the sustainability and climate resilience of Indian agriculture. India's agriculture sector is not only the backbone of its economy, but also the primary source of livelihood for a significant portion of its population. However, the sector faces numerous challenges including erratic rainfall patterns, depleting water resources, and changing climate conditions. Today we have with us Dr. Ashim Kumar Saha, co-founder, Naparati Innovation Private Limited, IIT Guwahati, who shall enlighten us on the topic. Dr. Ashim Kumar Saha is passionate about innovation for social impactful causes. He has done his Masters in Physics from IIT Guwahati and PhD from Radboud University, Nijmegen, the Netherlands. And after PhD, Dr. Asim returned back to India and started Naparati Innovation Private Limited with his friend to improve the livelihood of small and marginal scale farmers of India. A warm welcome to you, sir. And as a token of appreciation and gratitude, we would like to present you with a small token. So I would request the presenters to kindly come forward. Thank you. Now I would like to hand over to Dr. Ashim, who shall take the session forward. Yeah, thank you for the introduction. So, first of all, shall I speak in English or kind of combination of English and Hindi? English and Hindi. I think, yeah. Okay. So, I think you are here for a long day, right? Yeah, since morning. So, I think, yeah, so I don't want to get you bored. So, that's the first thing, because I also get bored when you so many things. So, I'll try to make it very interactive. And you please stop me in between if you have any question. Don't wait for the end, right? I also forget so many things. So just stop me and ask me. Okay? So as it's said that, okay, can you come to the first slide? Yeah, that is important. Why? Because I did my masters in physics, right? Why agriculture? So this is my backyard garden. Oh, I love gardening. So, for example, for last 2 years, my elder sister is asking to make a house, big house there. I said no. I'll do some plant there only. No, I can't cut any plant. Yeah? Next, please. So, before I come to the main thing, so what we are doing, little bit about our company, what we are trying to do. So, as I said, so our company is Naparati Innovation Private Limited, and we are trying to help small and marginal scale farmers of India. So that is our prime motive. For example, there are a lot of technology available in India and abroad. But problem with that is when it comes to the small and marginal, maybe it is audible, right? and I would request you to kindly, if you need to take your phone or need to talk, I would request you to kindly do it outside. If you have to talk or not, because it's very distracting for the speaker, no? Thank you so much. Yeah. So mainly we are targeting, as I said, कि छोटा फार्मर के लिए क्या है? क्योंकि उनके लिए उनका यहाँ पे जैसे I visited Meghalaya for last few months and Uttarakhand. Their main problem is they have very small land holding. That is main problem right here. Because for example, I've been in Holland, Netherlands. Their farmer का एकड़ होता है, एक farmer. They are rich people. They drive Mercedes, Porsche like that. Because of they have huge amount of land, what they can do, they can use the big machineries, right?
But here in say Northeast Assam or even India, let's say I have say 1 acre of area. I am doing some crop. Say you have some 1 acre, you are doing crop. So we can't use machineries or technologies for this small area, right? So it has to be kind of, make it kind of, so one main thing when I am trying to connect with people or maybe when I get chance to talk to some policy maker or government, because as I said I am connected with IT Guwahati, so due to that I get chance to meet them. So main thing focus is kind of, we have to do kind of society farming, right? So I have a 1 acre, other 10 has 1 acre, so kind of 10-15 acres together, right? Then what we'll do, let's say for this device that we make, it's for water management. If I give for only say 1 acre of field, that price, you can't get any value, right? You install this device, but it won't give you value back because it will be expensive. Why? This device can kind of control even 10-50 acres. So you do community farming and use this device. It will be at very minimal cost and it will give you profitability. So that is the one important thing I think we have to change here in India. And I think see, if you sit for kind of policy maker and government, it will take long time. For example, Punjab they have changed. Punjab में क्या है अभी बहुत जगह पे community farming है. आप अगर चाहो भी तो कि मैं एक crop करूँगा, no, they won't allow you. आपका लैंड आपके नाम पे ही रहेंगे, लेकिन वो पूरा एरिया स्पेसिफिक क्रॉप होंगे, so that they can use machineries. So इसीलिए I will really request, for example, who is means आप लोगों का जो NGO है, PC से farmers को ये वाला चीजें इशू समझाएं and then try to do community farming. So that will help in a very big way. Yeah. Next, please. So yeah, so I said that connection because yeah, so I got the opportunity to do my PhD in Holland. So there actually we have a day out. So I am trying to give little bit story so that you don't sleep, huh? Yeah. So little bit technology will come in between. Okay. So there we have a day out. In the day out we visited big farms there. They have really high-tech farms like poly house. It was the farmers they are kind of growing some tomatoes, cherry tomatoes, like in a little bit area, huge, 10-15 times more what we grow in India. Because they are using technologies and they know the knowledge, right? But when I came back to India, so with Shishir, this is my company partner, Shishir. He is alumni of IT Bombay, electronics. So he takes care of actually our technology part. I take care of business and kind of some R&D, meeting farmers. I love meeting them. So those part I do. So what we planned that we came to India. Then first thing I did, I bought a car. Okay, and then we both traveled around 5 states by road. I love driving. That is my hobby. Okay, I met so many farmers, so many NGOs, so many farmer training centers, and my main aim was first thing to know what is the problem they are facing. We didn't make anything in the beginning. We just wanted to know what is the problem. So main problem we found that here it is kind of people having that farm management issue, for example, because they have knowledge, but sometimes they don't know how much to give, how much fertilization need to give, which pesticides need to give, which crop they even need to do. Very basic things. For example, we have a land here. It is very common कि उनको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा क्रॉप करना है, they just do something. लेकिन वो क्रॉप रेडी है दूसरे क्रॉप के लिए, जिसके लिए आपको फर्टिलाइजर मतलब जरूरत ही नहीं है, काइंड ऑफ वो ग्रो हो जाएगा. But since वो सॉइल टेस्टिंग वो सब नहीं हो पा रहा है रेगुलरली, अभी भी है देखिए. I don't want to make any political comment, but thing is that there are labs, moving labs or government they spend really huge machineries. But problem is that आप sample भेजते हो, it still takes quite a lot of time, right? So वो वाला चीज very basic चीज हमारा missing हो रहा है, जहाँ पे जो पता नहीं है क्या करना है. But that is not the case in USA, Europe, right? So वो problem है. Then एक problem है यहाँ पे जो बीमारी लगता है, pest. फार्मर लोग मतलब बहुत लोग रो दिए कि सर ग्रो कर रहे हैं, लास्ट में पेस्ट आ गया, मेरा से पोमोग्रेनेट कर रहे हैं, पेस्ट आ गया, मेरा क्वालिटी इतना खराब हो गया, प्राइस आधा भी नहीं मिला.
तो 2-3 उन लोगों से मतलब मेरा बहुत मेन प्रॉब्लम हमें पता चला. After that, then we came back and we started thinking how to do. Right, next please. And another thing, very big challenge for even us now also. So when we go to talk to them, so we have to think how to solve their problem. For example, Meghalaya has some other issues that we are trying to solve. So one plot is here, another plot is here, same person, right? So how you give solution, right? For example, we have solution like we know like how much water required in this plot. We have a sensor, but for this it will be different because you know water will flow. So we have to put sensors in that field also. Then problem comes is it gets expensive, right? So we can't provide it. So I'll tell the thing, but good thing is that now we have developed their products specially for hilly areas, and Uttarakhand through Agni will be installing in coming few months for those solutions. Right. Okay. Next, please. Yeah. So we started our solution line. It is kind of water management. That was the one thing we wanted to focus because in agriculture आपका अराउंड 70-80% फ्रेश वाटर जो हमारा यूज होता है ना वो एग्रीकल्चर में ही होता है वहाँ पे. एंड अनदर थिंग वो इतना होने का रीजन अगर यूज हो रहा है दैट इज गुड, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ से भी मे बी अराउंड 40% जस्ट वेस्टेज हो रहा है बिकॉज ऑप्टिमल इरिगेशन नहीं हो पा रहा है, राइट? सो वाटर विल बी वेरी बिग चैलेंज इन कमिंग फ्यू इयर्स. फॉर एग्जाम्पल नाउ अभी हम लोग जब तेलंगाना में किसी फार्मर्स को या गवर्नमेंट को जाते हैं ना, वहाँ पे हम लोग अपना सॉल्यूशन जब बोलते हैं कि क्या करता है, हम लोग बोलते हैं सर ये इतना % पानी बचाता है. We don't see even say कि yield बढ़ाता है, वो भी करता है, प्रॉफिट होता है, क्वालिटी अच्छा था नहीं, हम लोग बोलते हैं कि पानी बचाता है बिकॉज वहाँ पे पानी का किल्लत है. बट जब मैं असम का एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिला हूँ, वहाँ पे बोला हूँ यहाँ पे yield बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, क्योंकि वो इशू होता है यहाँ पे. पानी के बारे में बोला ही नहीं क्योंकि वो लोग यहाँ पे पानी अभी है, they won't take care, right? So that will be the very big challenge in coming years. So we are not realizing अभी it will be definitely huge issue क्योंकि आप अभी हम लोग एसी है, गाड़ी है, वो सब ठीक है, बिना खाना का कोई नहीं रह सकता. We have to eat, और खाने के लिए एग्रीकल्चर करना ही पड़ेगा, राइट? तो वो अगर सस्टेनेबल नहीं कर सकते हैं तो बाद में वो इशू आएगा. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप लोगों का जैसे कोई भी खेती कर रहा है, सबको मैं जो बोल रहा हूँ मैक्सिमम यू नो ऑल दोस थिंग्स. व्हाई आई एम डूइंग बिकॉज सेइंग द सेम थिंग बिकॉज वी हैव टू रियली थिंक हाउ टू डू इट एंड काइंड ऑफ हाउ टू मैनेज इट एंड हाउ टू मेक इट काइंड ऑफ यू नो सो दैट स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज इंडिया में अराउंड 80% डिस्टर्ब है स्मॉल फार्मर्स. वो लोग अगर अडॉप्ट करेंगे देन ये प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा. बड़ा फार्मर जो है ना वो लोग कर रहा है, वो लोग हमसे बड़ा मशीन, हमारा मशीन 7-8 लाख रुपए का भी मशीन खरीद रहा है, वो लोग कर रहा है. बट प्रॉब्लम सोल्व कब नहीं होगा? सोल्व होगा जब छोटा फार्मर करेंगे. लेकिन छोटा फार्मर हम लोग कभी उनको जाके कभी भी मैं बोलता भी नहीं कि आप ये डिवाइस लीजिए, इसका प्राइस ये है, मुझे मारेगा वो लोग, भगाएगा. हाँ, उनका बोलेगा मैं राइस कर रहा हूँ, मेरा इनकम ही होता है 10,000-15,000, आप मुझे 15,000 का एक डिवाइस दे रहे हो, राइट? सो वी डोंट गो टू फार्मर एट ऑल, स्मॉल स्केल फार्मर, बट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? सो उसके लिए हम लोग कभी करके आ रहे हैं, हम लोग NGOs are there kind of these days, mainly they are adopting technology. NGOs at least गवर्नमेंट के थ्रू से ट्राई कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट? So that is one of the main issue we will be doing, and also our another kind of my dream actually, that is my dream and my Shishi's dream कि जो पेस्ट है ना वो इशू हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का अभी कोई खेती करे, पेस्ट एक बार लग गया देन कंट्रोल करना इज डिफिकल्ट. हम लोगों का सेम बीमारी अगर ज्यादा आ गया तब डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग पहले से अगर खाना टाइमली किया, नींद ठीक से किया, कुछ चीजें प्रिकॉशन लिया, साल में कभी कभार हम लोग टेस्ट वगैरह कर लिया, देन हमारा खतरनाक बीमारी नहीं होता है, राइट? बचाएंगे. इवन अगर है भी तो पहले पता चल जाएगा. तब क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना किसी का पकड़ लीजिए कैंसर, अर्ली स्टेज में अगर हो गया पकड़ना तब सोल्व होता है, लेट स्टेज में नहीं होता है. सो इट्स द सेम थिंग फॉर
पेस्ट वाला, एक बार आपका आ गया देन इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एंड उसके वजह से क्या होता है, ज्यादातर तो लॉस होता है, देन और जो क्वालिटी में इशू आता है, एंड देन उसका जो मेन एक ये है इशू आ रहा है वो है कि सॉइल पोल्यूशन, बिकॉज उसके लिए तब इमीडिएट, क्योंकि देखिए इतना मेहनत करके खेती कर रहा है, सोल्व तो करना होगा राइट, इतना सारा पेस्टिसाइड डाल देते क्योंकि बचाना तो है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो जाके सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर हो रहा है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है, सो दैट विल आल्सो हेल्प, मींस बहुत हेल्थ हैजर्ड भी है आपका। पंजाब के उस तरफ भी कुछ और स्टेट है, इवन गुजरात में भी कुछ स्टेट है जहाँ पे मतलब कुछ एरिया में वहाँ से पानी पीना ही बंद है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर का रिलेटेड वो मिला पाया गया है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स राइट। आप लोग मुझे थोड़ा टाइम का बताएगा, सो एट व्हाट टाइम आई शुड स्टॉप, सो बिकॉज यू नो आई नो ये एवरीवन बहुत लंबा दिन है, सो आई विल कीप इट वेरी it's up to you, and up to I think them, so maybe how much you want to listen, I'll talk in that way only, right? So Please, by 5:50. Everybody is like, I know, that's why they're very exhausted. yeah, exactly. So yeah, next please. Next please. So as I said, so I already spoke about the key issues, key problems, right? Those are, there are even another actually very key issues that we found that हम लोगों के यहाँ पे कि लैंड का अकॉर्डिंग या लोकेशन का अकॉर्डिंग क्या क्रॉप करना है, वो वाला चीज हम लोग बहुत सोच नहीं रहे, वो वाला चीज में आपको रियली और उसका भी इशू है पता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले। और लीजिए मेघालय में कुछ खेती होता है जो नेचुरली वही इसके लिए अच्छा जाना जाता है, लेकिन उससे आपको 10 रुपए मिलता है, लेकिन दूसरा एक क्रॉप है वो करने से मुझे 100 रुपए मिलेगा, क्या करेंगे, वो ही करेंगे, लेकिन इन लॉन्गर टाइम वो बड़ा इशू हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि सॉइल का डिग्रेडेशन और बहुत सारा चीजों में इफेक्ट आ रहा है। सो वो नेक्स्ट प्लीज। So yeah, as I said, next please, कि सारा marginal farmer है, तो we are trying to solve that. Next please. And again, कि इंडिया का जो है ना लैंड होल्डिंग वो छोटा हो गया है with time. So that is the big issue, kind of adopting the technology. So as I said, कि small handling उनके लिए हम लोगों को solution लाना होगा, so that it is very intuitive to use. क्योंकि farmers को टेक्नोलॉजी जाके अगर मैं दिया अरे आप मोबाइल से ये करो नहीं होगा, so you have to have some solution कि लग गया उनको कुछ नहीं करना है, that will be done automatically, right? And also very important thing, cost effective. अगर गवर्नमेंट भी दे रहा है तो गवर्नमेंट भी तो किसके पैसे से, आप लोगों का पैसे से दे रहा है ना, तो अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दूंगा तो क्या करेगा गवर्नमेंट, कम में लेके ज्यादा लोगों को दे पाएंगे, राइट? सो इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर इंडियन, राइट? एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कम्युनिटी फार्मिंग, या नेक्स्ट प्लीज। Next please, this is about next. So yeah, so as you said, kind of अभी ड्रॉट के वजह से बहुत जगह पे खेती करना लोग बंद कर दिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे बोरिंग का भी फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, तो इन आई नो बिकॉज इन माय होम टाउन सम प्लेसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, वो लोग एक बार खेती करते हैं ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, एंड उसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है, असम में फ्लड का बहुत इशू है, तो जैसे लास्ट ईयर 2-3 बार फ्लड आया, जिस सीजन में फ्लड आने का चांस ही नहीं था पूरा क्रॉप खत्म कर दिया, तो लेकिन जिस टाइम में फिर जब फ्लड का चांस कम है तब नहीं कर पाता है, क्योंकि बोरिंग नहीं है, पानी का तब किल्लत इशू है, तो उसके वजह से बहुत इशू आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज। या सो देयर आर those issues, right? Groundwater issue जो है मेन चीजें है, और we have to solve the problem. Next please. Yeah, as I said, क्योंकि वो जो क्लाइमेट जो अभी जो बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आपको भी पता है कि राइट शिलोंग में वेदर कैसा था some years back, अभी क्या है, अभी मैं सामान में शिलोंग में भी बहुत डिफिकल्ट है, it is that hot, right? So वो सब का वजह से काफी इफेक्ट आ रहा है, इवन आपका वो जो पेस्ट है ना, बहुत सारा चीजें, कुछ बीमारी ऐसा कंडीशन हो गया कि वो बहुत डिफिकल्ट है जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल
हैदराबाद में हमारा कंपनी आईटी गुवाहाटी एंड हैदराबाद में दोनों जगह पे है। यहाँ पे R&D ज्यादा होता है और वहाँ पे R&D प्लस मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कुछ क्रॉप में मतलब वो बीमारी आ ही जा रहा है, सोल्व ही नहीं कर पा रहे, कैसे आ जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। तो उनके लिए एक्चुअली हैदराबाद का तेलंगाना गवर्नमेंट हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है, वो अर्ली पेस्ट प्रेडिक्ट करने के लिए, वो चिली के लिए। तो हम लोग एक्चुअली 2 साल से वो काम कर रहे हैं। सो होपफुली इन कमिंग 4-5 मंथ्स वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वो क्या करेगा एक्चुअली, आप लोगों को चिली फार्म में जो बीमार आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं कुछ ब्लैक फ्लाइट के बीमारी आ रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पे 25 क्विंटल होता है 1 एकड़ में, सिर्फ 7 क्विंटल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा होता है तेलंगाना आंध्रा में चिली, तो गुंटूर चिली वो सब ना बहुत होता है। तो इमीडिएट वो लोगों ने इमीडिएट ग्रांट एक दे दिया प्रोजेक्ट के लिए। सो वी आर डूइंग इट। सो वो अगर हो जाता है तब क्या कर सकते हैं हम लोग, फार्मर्स को कुछ कंडीशंस है, एनवायरमेंट कंडीशन, उसके वजह से हम लोग एक्चुअली बहुत दिनों से हमारा बड़ा एरिया में डिवाइस लगा हुआ है, मॉनिटर कर रहे हैं प्लांट को, जब छोटा से लेकर बड़ा होता है, इवन बीमारी के टाइम में भी मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पे पेस्टिसाइड कुछ नहीं लगा रहे, सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है बीमार, कब हो रहा है, कैसे आगे चल रहा है। जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा आएगा तब क्या करेंगे हम लोग, फार्मर्स को पहले हम लोग बता सकते हैं कि अभी आपका फार्म में वो बीमारी आने का चांसेस है, तो आप प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन भी क्या, हम लोग ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि आपको कौन सा से बायो पेस्टिसाइड्स या क्या यूज करना है, वो सब कितना अमाउंट में, वो सारा चीज इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, जहाँ पे लेट्स से पेस्टिसाइड्स जहाँ पे 100 किलो यूज हो जाएगा होता था, अभी मे बी विदिन 5 to 10 kg प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या सो नेक्स्ट प्लीज। सो वो सारा जो प्रॉब्लम है ना, उसके वजह से हमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का जरूरत है ही, क्योंकि इसके बिना पे आपका डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई काइंड ऑफ नेदरलैंड इज सक्सेसफुल बिकॉज दे आर यूजिंग टेकिंग, बिकॉज कुछ चीजें हमारा ह्यूमन का हाथ में नहीं है, और कुछ चीजें जैसे हमें सॉइल हेल्थ मॉनिटर करना है, सॉइल का क्वालिटी, उसके बिना पे हम लोग कुछ करने से कभी भी नहीं होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड सम टेक्नोलॉजीज, बट अगेन हियर इट हैज टू बी फर्स्ट थिंग फॉर इंडिया इज अफोर्डेबल, एंड अनदर थिंग कि यहाँ पे फार्मर्स का सबका रिक्वायरमेंट अलग है, उसके हिसाब से अडेप्टेबल करना पड़ेगा। असम का रिक्वायरमेंट अलग है, फार्मर का यहाँ पे अलग है। तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि मैं असम को जब दे रहा हूँ एक कुछ प्रोडक्ट बना के दिया, मेघालय में आने से मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट, देन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, राइट। तो तब क्या होता है, प्रॉब्लम आ जा रहा है। अभी क्या होता है, कभी-कभी कल आई थिंक चीफ मिनिस्टर जी ने बताया एक चीज कि मैन्युफैक्चरर को भी सोचना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ट्विक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आई रियली अप्रिशिएटेड हिज वर्क। क्या है, तो लकीली व्हाट हैपेंड, बिकॉज़ शिशिर इज आई से ही इंजीनियर, he can do anything related to software, hardware, anything, right? We are actually Raspberry Pi design partner of UK, so we get clients from abroad also. They need customer solutions, so first they talk to me before going to Shishir. So I tell them we can make anything from you for you, but yes, it has to be financially viable, right? Then only. So Shishir ने हम लोगों ने किया 2 साल में इस टाइप का एक डिजाइन सब रेडी किया। अभी पकड़ लीजिए, आप मेघालय के लिए कुछ चाहिए तो हम लोग इमीडिएट दे सकते हैं, असम के लिए दे सकते हैं, गुजरात के लिए दे सकते हैं, केरला के लिए दे सकते हैं, सब जगह के लिए दे सकते हैं। ऐसा हमारा पूरा डिजाइन हो गया अभी। बट यस, वी स्पेंड मोर देन 2.5 years टू डिजाइन दैट। या नेक्स्ट प्लीज। सो या जो सॉइल सेंसिंग वाला में ये चीज आप लोग कोई अगर सॉइल सेंसिंग में सोच रहे तो आप कि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल वाला। वेरी फर्स्ट थिंग कम्स कि आप यहाँ पे क्या उगा सकते हैं, यहाँ पे क्या एनपीके या जो क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, वो वाला चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से क्या होगा, जो फर्टिलाइजर है ना, अभी क्या होता है आके कुछ भी डाल दिया, जरूरत नहीं, आपको ऐसा भी हो सकता है कि फॉस्फोरस का जरूरत ही नहीं है, तो दैट विल सेल, राइट। एंड अनदर ये है कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि सीड मिलता है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पूरा नहीं हूँ, व्हाटएवर आई लर्न आप लोगों से फार्मर से मिलके मैं सीखा हूँ। तो वन थिंग इज कि कुछ बहुत सारा सीड्स है वो आपका लोकेशन या क्लाइमेट के बेसिस पर अच्छा होता है, सीड का क्वालिटी ह्यूज है, बहुत है, वो वाला चीजें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप शिलोंग में ये एरिया के लिए कौन सा सीड लाएंगे, वो सब देखना पड़ेगा।
obviously government also need to take care of that. Next, please. Yeah, I still 10 minutes. So yeah, so for this sustainable thing, what we have to do, हम लोगों को जो adopt करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल क्या है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों एक फार्म है मेरा, मैं अगर मैन्युअली कर रहा हूँ तो मैं ठीक है ऑन करके दे दिया, कब भूल गया, जहाँ पे मुझे मतलब 10 लीटर पानी देना था वहाँ पे मैं 100 लीटर दे दिया, राइट. तो टेक्नोलॉजी जब आएंगे, व्हाट इट विल डू, आपका फार्म में कितना पानी लगेगा, इट विल नो एंड इट विल गिव अकॉर्डिंगली दैट अमाउंट. उसके बाद वो स्टॉप कर लेगा, पानी नहीं देगा. और अनदर गुड थिंग इज कि वो जो हमारा डिवाइस है, पहले जो फोटो दिखा, वो ऐसा करके बना हुआ है कि आप लोगों का कुछ भी क्रॉप हो, वो केबीके से डाटा मिल जाता है. उस अकॉर्डिंगली किसके लिए क्या पानी चाहिए वो अमाउंट देगा. इफ यू आर डूइंग से कैप्सिकम क्या चाहिए, पानी कितना चाहिए, कितना टाइम देना होगा, वो मशीन ऑटोमेटिकली देगा. नेक्स्ट टाइम अगर उसका जगह पे टोमेटो कर रहे हो, सिर्फ जो सेटिंग्स है ना वहाँ पे हम लोग दे भी देते हैं. टोमेटो यस प्लीज. Suppose we have multi-cropping. Yeah. The machine can handle that one. Different requirement for, say, for capsicum. Very good. Yes, we can do it. So and very simply I said how we can do it. For example, so yes, that's very small machine don't work. Little bit bigger. क्योंकि उसके अंदर ये करना होगा ना, स्मार्ट थिंग डालना पड़ेगा. So yes, so let's say you have, so this is a plot. You have 3 plots. यहाँ पे let's say you are doing capsicum, cherry tomatoes, let's say brinjal, right? So you need different thing. So our system will know. यहाँ पे क्या करेंगे, very simply देता हूँ कि पानी का आपका सोर्स है. यहाँ पे क्या होगा, एक ऑटोमेटिक भाल्व लगेगा, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक भाल्व, जो क्या होता है मशीन ऑटोमेटिक सॉलोनॉइड भाल्व खोल देगा. यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया. तो कोड में पता है कि ये भाल्व मतलब कोडिंग का ऊपर है, मतलब ये आपका ब्रिंजल खेती के लिए. भाल्व नंबर 2 इज काइंड ऑफ टोमेटो, भाल्व नंबर 3 इज काइंड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग है कैप्सिकम. यस. सो मशीन अकॉर्डिंगली कैप्सिकम के लिए जितना पानी होगा वो ऑन करके दे देगा, फिर बंद हो जाएगा. लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से टोमेटो के लिए और ज्यादा देना है तो वो वाला बंद नहीं करेगा, और चलता रहेगा, फिर खत्म होने के बाद ये बंद करेगा. लेट्स से ब्रिंजल के लिए और ज्यादा चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं, तब वो और चलता रहेगा, वो खत्म होगा तो बंद करेगा. सो यस, इट इज पॉसिबल. Sir, I want to add something to what you just said about multiple cropping. We are not doing separately in the same row or like that, what you just explained just now, according to what I understood. Yeah. But then what we did is that there is a season where we cultivate this. We cultivate maize, turmeric, and then beans in the same spot itself. Like in the same spot. In that way, how it will handle. Not separately, it's same spot, not the row, not separate. Mixed cropping. Yeah, mixed cropping. Correct. इसीलिए जैसे ऐसे फास्टिंग में क्या बोला, मैं तो अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ कम्युनिटी फार्मिंग करने के लिए. आप लोग छोटा में 3-4 कर रहे हो, कैसे करेंगे बोलते हैं. How I solve? I got my understand that. You talk about irrigation, right? Like for this particular crop, this particular amount of water is needed. Ma'am, we can give you solution, but will it be viable? आपको मैं इतना सेंसर लगा के दूंगा, उसका प्राइस कितना लाख हो जाएगा, आपका फायदा होगा. That's what I'm asking. How will Exactly. So that's why first thing is you have to select कहाँ पे कितना करना है, क्या करना है. मार्केट क्रॉपिंग ठीक है, लेकिन maybe not that way. Maybe शायद आप कुछ अभी ग्रो करो, नेक्स्ट क्या क्रॉप ग्रो करने से आपको फर्टिलाइजर वगैरह कम रहेगा. Sir, why I'm asking this because we have been practicing this. We have been practicing this, and we are still doing it. That's why I'm asking this. Right. So in that scenario, I have to think. I'll take your question. Yeah. See, what I don't know, I have to. So I have to, because you are doing that practice. This is something area related, so we are practicing this. Yeah. So yeah, maybe see, it has to be kind of little bit adjustment we have to do. कुछ हम लोग कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमेशा वो करना पड़ेगा. अगर if it is not good, आप समझे ना, अगर कुछ वो गुड है, उसके वजह से अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ वो करने के वजह से सॉइल का अच्छा हो रहा है या जो भी हो रहा है, अगर गुड है then you do it. I'll try to find solution for you, but first you have to tell me whether it is
good, helping some way. It's a good or not, I don't know, but traditionally it has been practicing. So I think Gosens I think, are I practicing think it. the thing is that the mixed cultivation that they are doing can be viable if you do it in large scale. Because the kind of what he's talking, the technology that he's talking about, once they develop that kind of a technology, there's a cost also involved to that, right? So if you have a very small space or a very small plot or a very small land that you're cultivating, then it's meaningless to actually invest on such technology, because I don't think it'll be viable, right? Yeah, actually, I think very well. So I'm just telling you how we are practicing. Whether you will be able to help, that is, I'm just discussing you how we are doing farming. It has nothing to do whether you will be able to invest or you, but I'm just asking if you can help. But people in my place, whether they have big plot of land or small plot of land, they are practicing mixed cropping. For the mixed cropping, only the time of harvesting will be different. For example, maize will be harvested before the turmeric will be last. Then after that, maize, even pumpkin also, all together the seed they will be together. So I am just telling you our tradition, our culture. So whether irrigation will be possible or not, you can take this into consideration. So I'll tell, actually now, you are doing maybe somewhere good multi-cropping, because say let's say अगर different हो रहा है, हम लोग खाने में एक ही चीज खाने से, let's say in that sense, farmer कर रहा है खुद अपने खाने के लिए, right? So if they are doing different crops, so different times they can sell, they can earn. उस टाइप का solution भी होगा. So yes, it will help that in that scenario. मैं एक चीज बताता हूँ, जहाँ पे जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी, कहीं का अगर छोटा लैंड है, हमें फिजिकल वर्क भी करना है ना. आजकल देखिए मैं कितना मोटा हुआ है. So I don't know if you are saying about when small land is, maybe it is she's speaking a very small land, right? There are big also. Yeah. So very small land, then I think it won't be viable, financially viable at all, right, ma'am? So for that, yes, the solution is available. It is not viable. So right, for bigger farm. Actually, till date we don't need any irrigation. But then you just mentioned about global warming and sustainable agriculture. So in future, who knows, we might need irrigation. That's why we need. In future, it will be needs. Yeah. So we have to bring this at the earliest. So now I have luxury having this water. यहाँ पे कोई पूरा पानी फेंक भी गया है. Maybe down the line 30 years, ये पानी के लिए फाइट होगा. So daily. And when I'm saying it is in a very serious way, I'm saying. So we have to really take care of things. So yes, when आप लोग drip system या वो सब जब use करते हैं ना, not only water saving you are doing saving for next generation. मतलब तब तक हम लोग मर जाएंगे, but they will be there, right? Art will be there, right? You have to think. I think this is the time you have to really think. अभी हम लोग ठीक है, बातें आते हैं sustainable, सब सुनने में अच्छा है, but are you really practicing that? So that's the thing we really have to do, right? And also in a big way that also helps, right? हम लोग मैं एकदम एग्जांपल देके बोलता हूँ. मैं ना अभी आज अगर मैं होटल में जाकर ज़्यादा खा लिया, मेरा रात को इशू होगा, गैस प्रेशर इशू होगा, और मैं अगर कम भी खाता हूँ, भूख लगेगा, रात को नींद भी नहीं आएगा. It is kind of same for plants also. If you give optimum ना, आपका productivity, quality, you can do some cultivation like just for checking. We did it in Hyderabad. Huge difference. Crop quality, crop trace, right? Huge difference. So वो बहुत help होता है. आपका जब optimum होता है ना, and also बीमारी भी कम लगता है. That is also proven. हम लोग जो पेस्ट वाला कर रहे हैं, अभी हालत ही ऐसा बना दे, इतना ऐसा लगा कर कुछ बीमार आ गया. उसका भी जरूरत नहीं है अगर हम लोग अच्छा sustainable farming करते हैं, right? So I hope I answered your question. Yeah. Next please. I think because fine. So these are kind of, I'll say, systems, right? We are trying. We did some in the institutes. We have installed, right? And from them, kind of, we studied here. क्या ज़रूरत है? कौन सा ज़रूरत है? कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग इनोवेटर है. हम लोग जैसे मेरा दोस्त उसके साथ भी मेरा फाइटिंग होता है. Because क्या होता है? वो because he knows so many things. वो पूरा सब टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं. जब आप टेक्नोलॉजी जितना देना चाहोगे,
आपका मोबाइल में से 64 GB होने से एनफ है, और फिर 250 से डालने से प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा ना, जरूरत नहीं है राइट। तो शीशे के साथ मेरा यही फायदा था, नहीं तो उतना में ही रखो ना, क्योंकि कम होगा, जिसको रिसर्च के पर्पस में चाहिए होंगे उनको देंगे डिफरेंट सेंसर राइट। सो हमारा वो सब सारे इंस्टॉलेशन वो सब है बहुत जगह। हमारा मेनली वी आर अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्टिंग। हमारा एक प्रोडक्ट बनाया था न्यूट्रिएंट डोजिंग सिस्टम फॉर हाइड्रोपोनिक्स। इंडिया में बीच में सडनली हाइड्रोपोनिक्स का वेव आया था, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल हियर, क्योंकि आपका जो कुछ ग्रो हो रहा है बाहर में 10 या 20 रुपए में मिल रहा है, वहाँ पे जब करोगे 50 या 100 में बेचना पड़ेगा, चांस ही नहीं है। बट इन हॉलैंड इट इज डिफरेंट। हम लोग जो धनिया खरीदते थे ना या मिर्ची, मैं याद है मैं हाफ पीस भी यूज करता था, क्योंकि उसका प्राइस इतना था, इंडिया से ज्यादा था। कोरिएंडर हम लोग मतलब उसको गोल्ड के हिसाब से यूज करते थे, इतना एक्सपेंसिव था। बट यहाँ पे मैं घर में कुछ कुक करता तो मैं कुछ फ्लेवर के लिए 4-5 होल चीजें ऐसे ऊपर डाल देता हूँ, लास्ट में देख के ढक के रखता हूँ। बट दैट इज बट वहाँ पे क्या है, मतलब प्राइसेस ज्यादा है, तो आप बाहर करो या कंट्रोल एनवायरनमेंट में करो, हाइड्रोपोनिक्स में वैल्यू मिलता है, तो वहाँ पे साथ में Therefore, we are exporting our product to South Korea and Canada, and we get our distributorship to those two companies for hold on. कि आप कैसे बिल डालो ऑर्डर लाके तो आप लो, हम लोग नहीं करने वाले राइट। So we are exporting some devices, but mostly in India our main focus is small and marginal farmer का livelihood increase करने के लिए, and उसके लिए we are trying our best. We need obviously support from this NGOs, all those things, because उनको ही फार्मर को अवेलेबल कराना है। फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइस 5 फार्मर यूज कर सकते हैं, तो 5 लोगों को बिठा के कि हाँ आप लोग ये वाला यूज करो, तो वो सब चीजें वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते राइट। So we are trying in that way to try to increase livelihood of small and marginal scale farmer with the technology. And very एक बार नीचे जाइए, जस्ट एक चीज दिखा देता हूँ कि और सॉल्यूशन है आईटी कानपुर से कुछ बैक नेक्स्ट वो सब बड़ा मशीन है, एक 100 एकड़ का भी काम करता है। नेक्स्ट यस एग्जैक्टली। सो ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जो मेन एक अभी इशू हो रहा है ना, जो सॉइल टेस्टिंग वाला, किसी ने मेरे साथ थोड़ा टाइम पहले बात भी हुआ था कि काइंड ऑफ 1 महीना लग जाता है रिजल्ट आने से, मुझे वो पता नहीं था, आई थॉट कि और जल्दी होता है। सो वहाँ पे आईटी कानपुर में, मैं आईटी गुवाहाटी के बाद आईटी कानपुर में था 2.5 years। मैं एक्चुअली पीएचडी भी ज्वाइन किया था, देन मैं हॉलैंड गया। सो दे आर एक्चुअली इन आवर सुपरवाइजर्स ग्रुप वी हैव डेवलप्ड ए डिवाइस, very portable device। नेक्स्ट डायरेक्ट डिवाइस पे आते हैं, आप लोगों को जल्दी छोड़ देंगे। हाँ, एक डिवाइस एक बनाया है, क्या वो क्या करेगा, आप सॉइल या किसी जगह का भी एक ही चीज करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा। वी विश कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, वो नहीं पॉसिबल है, वी ट्राइड आवर बेस्ट, नहीं होगा। तो सॉइल को आपको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में लाना होगा, that is the only thing you have to do, and then आप सैंपल को जब डिवाइस में लगाओगे ना, within minutes it will give accurate result, NPK micronutrients आपको दे देगा राइट। वो मैं बोलने का ये बता रहा हूँ, this can be also used as mini lab। फॉर एग्जाम्पल आप, क्योंकि एक बार खेती के लिए एक बार देखने से आना है, फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए कोई अगर एक डिवाइस खरीद लिया, सारा गांव या उस जगह पे वो एक मिनिमम प्राइस लेके, अभी आई डोंट नो कितना खर्चा होता है, भेजने के लिए टाइम जाता है, मिनिमम एक प्राइस लेके सबका टेस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी इनकम आ गया और सबका भला हो गया राइट। सो देयर आर सॉल्यूशन, सो दैट नीड टू बी अडॉप्ट, and also this solution will be if someone kind of plan through NGO activities, very I think they can procure it for one क्या यहाँ पे village कितना या some area right। So there are already solution available, only thing is we have to be aware and we have to adopt, and also again I will say as a we should not sit expecting government or someone will do. Few things we have to try from our side, what we can do, that has to be done, नहीं तो नहीं होगा। That's few things. With that I like to conclude, and if you have any question please ask, I will try to answer. What's the price of this one? This soil testing? Soil testing. Yeah, soil testing that I have to, maybe I think
they are given to some companies because they are also professors, right? They can't do it. I think it comes around 30,000 or something. But it's a very accurate device, right? But again, आपको मतलब ऐसा करके खरीदना होगा कि ये आप सारा लोगों का भी करते हो, तब उसका वैल्यू आएगा. And it can last for several years. So it's a very I'll say in that sense it's a very cheap device. That means as individuals like entrepreneur or farmer, that means it will not be so cost effective. एक जन के मतलब भी नहीं आप वो ये के लिए ना सॉइल के लिए एक बार चेक करने से होता है. Even we have sensors which can they are not that accurate. 7-in-1 sensor record. वो एक्सपोर्ट आते हैं तो it can ECPH के dose, right? But वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके क्या करेंगे फार्मर एक्सपेंस बढ़ा के क्योंकि एक बार ही चाहिए उनको फिर नेक्स्ट क्रॉप के पहले सो वो वायबल नहीं है. रिसर्च पर्पस वी गिविंग जो एनजीओस है ना वो लेके वो लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं तो दे टुक सॉल्यूशन टू दो सेंसर एक्चुअली इन गुजरात में मैनग्रोव प्लांटेशन कर रहा है बिकॉज़ मैनग्रोव सी में होता है. Can is it recycled? Like can you recycle the equipment or tools? So now if supposing they just take it, do the testing and turn it back, so you can again recycle Right. it. Means okay, you are saying kind of ramp basis. Yes. Yeah, obviously that is possible, but उसके लिए भी kind of because those they are from IT can go how they are reached. I think it has to be through FPO से ये लोगों ने manage करना पड़ता है. से FPO by one for their village, and that device they will give to all the people, right? It is only आप क्या करेंगे एक गांव में गया पहले कुछ दिन पहले बता दिया आपका अपना सैंपल ड्राई करके सुखा के रखो 3 मिनट लगता है इससे लेस 5 मिनट एक सैंपल के लिए 12 लोगों का 1 घंटा में हो जाएगा. So right? I think for this kind of a thing we have to do a much deeper discussion on this. Maybe further connects. Maybe individually whoever wants to connect can connect on an individual basis. Maybe if they are interested or want to learn. I'm sitting and want to learn more about the different technologies that are available and how can they support their venture. So I think that we'll have to do, but I don't think it's going to meet with just this in half an hour, 40 minutes that has been given. In fact, he's even cut down the time. Looking at all of you, so I really appreciate that. In fact, most of you are looking tired and exhausted. I think we have all had a really exhausting day. Even I myself also am feeling exhausted. So like I promised, your snacks is here. So you guys can chill, relax and have a cup of tea and snacks. So we'll end the session and today's popular talk. And I thank Dr. Ashim for taking the time out, in fact, to come all the way to Shillong and to be part of this event. Thank you so much, sir. We are privileged to have you here. And thank you most importantly to you people. Without you people, I don't think this event would have been a success. In fact, this popular talk wouldn't be so popular anymore if there was no audience. So a big round of applause to you people. Thank you so much for being here. But before leaving, we have another task. That is the what? Yes, the mentee. So we do feedbacks after every session. So you'll get to know how your session went. Be very critical because very means very critical. Is that okay? It's rubbish if someone. No, I think it is very critical. Don't give the good thing. If you feel bad. It's very actually what we've learned. Yeah, from what we've learned today from your session, there were a lot of insights and inputs that you've provided, which we were not aware of. In fact, in terms of technology. And also, actually, I think I would say people are aware of very same things I didn't say anything new. Yes. But we don't realize that. Yeah, we're not aware. We're not aware. And there is certain bias. I just had one suggestion. What she shared is very interesting for you to explore. And just to be curious to see what makes it work and what make it better. Because she's trying to say it's a practice both which is practiced by small and medium farmers as well as large. And it's interesting to know because we're helping her for the future also. That is just a suggestion because you've gone to 5 states. Now maybe you have to do a little bit more research and analysis on the type of farming. This is kind of my first,
connection with Meghalaya. Because first time kind of I am trying to promote our products in Meghalaya. First time. We are mostly do outside. So definitely. So as I said, I traveled. मैं ऐसे नहीं बोला कि ये मैं घुमाऊं इधर उधर जाके किसी को भी मिलके मैं बोलता हूँ कि ये क्या है प्रॉब्लम क्या है आपका और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना बहुत लोग थोड़ा नहीं लैंग्वेज बैरियर मेरा आ रहा है You also got to know about agriculture, how we practice farming, right? So you get more knowledge even from us. Right, exactly. I definitely, right. So the current solution that he has is not really viable. Yeah, it's not For really small- relevant. Yeah, And small. even for Meghalaya, Yeah. for us, as of now, we still get like free of it, right? But we don't know what future will bring. Correct. If But we one don't thing have a is- global warming, for this, how we irrigate? Any कैसे no, दे? we don't do. Actually, Is there right now, rain? we don't do. No, we don't do irrigation. No, we don't need water. We don't need irrigation. Means the what rain fed मतलब? Rain fed. Okay. But तब तो जरूरी नहीं है. I already said we might need it in the future. Yeah. तब तो irrigation control का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पानी you need पेस्ट में भी अगर बीमारी कुछ हो रहा है Pest pest control. connection I wanted- that will come after 1 year I so you have wanted to to wait. discuss about that also, Yeah. but Pest we already control talked makes about sense. biopets this time, Yeah, so I exactly. didn't say anything else because in especially we are practicing pure organic farming. Yeah. We are practicing pure, but once the pests attack our crop, we can't help it. So it just got. I think that makes So we sense. really need biochemicals Yeah. for that. Yeah, exactly. So my aim is maybe Now down the line, few years, we'll have a solution for any type of crop, and farmers will get it free. They can just take a photo, right, and they immediately know what to do, right? So that is. But उसके पहले मुझे थोड़ा फॉरेन में एक्सपोर्ट करके थोड़ा पैसा कमाना है. Then only I can give it. Right? So. I think the kind of Kamalas are just yeah, kamalas. I think the kind of advantages we have here. So Yeah, if it is a rain pack, then definitely नहीं है. What will control? So where it is means irrigation, say drip, sprinkler, flood, there our system will be useful. Otherwise, and pest protection. we can always connect again. Okay, are you guys ready? Yes. Okay, already 30 of you are here, so let's start. So as usual, you can add your faces. Okay, we got a lot of happy faces. And some sad too. Maybe some are not relevant. Yeah, those maybe you can ask me outside. Later. I would love to answer that. Yeah, later the Definitely. ones who are sad, you can always meet Dr. Ashim and try to I'll stand with clarify. candidates here, can be 2 minutes. Yes. Definitely, because I need feedback. Yes. What is the maybe I am not talking about? Yeah. Yes, for this purpose, first time. So now we will go to the next question. What inspired you the most about this workshop? I think you became more like Chinese you. What inspired you? Technology, okay? Okay, what about the others? I like the fellow where is that? Ler Bha and Hit Bha. I'm still waiting for that person to answer. Smart innovation, good, smart farming, sustainability. Chinkalla Hakarep, okay, innovation in farming. Hit Bha tip top. Oh, what is that tip top? So there's one person who's responding like in Khasi, no? So first session he said Ler Bha, meaning it was good, it was very good. Second session he says Hit Bha, meaning it's a very hit session. Now he's written hit session tip top. Whoever this person is, I don't know. I've become a fan of him or her. Yeah.
maybe methods or screenshots of that line. Good. farming ideas, okay, encouraging. Then climate change solutions, agricultural solutions, adaptability in our place. One more farming. Somebody said it was okay, sir. Somebody wrote safety, okay. Some just sent a smiley thumb. Okay, Next question. Next question. How will you apply what you learn? Those who need to apply for the relevant ones, how can you apply this? That thing, that instrument to measure the fertility of soil, has Yeah. it gone into production? Have the IT professors? Yeah, it is in market. So those are the things. Yeah. Just share the links. It might help them to just further explore and engage. Yeah. To see. I thought it would be relevant because that is the main issue. That's why I put their fertility product. which tell you I even which didn't types ask of my plants. supervisor Yeah. that I'm keeping your product. I just came to my man. We'll take the instructions in my farm. Keep it up. Technology integration in ventures. Huh? I don't know. Organic cultivation better than next generation. Buy the device. Okay. Keep it up. Need more details. Okay. Rainwater harvesting, revenge, groundwater. Okay. Who wrote this? We are doing with PRL, with my colleague. Actually, I am the only one from my group in entrepreneurship. All of my colleagues are IT professors. So we are doing some collaboration. We'll make a device. Do you have a website? Yeah. Then maybe they can access the details and other things. Yeah. And somebody I has. think in first slide I mentioned the website. That will help. First or second slide. Somebody needs to apply the global warming. Okay. I would love to apply but need money first. Okay. Prime doesn't have money yet, so no, the drip irrigation. Some will apply that, the drip irrigation method. Good movement. We need more knowledge. Okay. By educating fellow farmers about this device. Okay. Maybe awareness. That's what we mean. Awareness to farmers. You can do something. Even very basic machine का छोड़ो, मैं लोगों को पहले सेल के लिए जाता ही नहीं हूँ उनको. आप अगर खुद पानी टाइमली अगर खुद देख के कि मैं 10 मिनट के लिए दिया बंद कर दिया, but do it, that will help. क्योंकि वही है ऑटोमेशन मतलब वो कुछ नहीं है, हम लोग टाइमली वो कंट्रोल कर रहे हैं, राइट. वो चीज अगर आप खुद एयर होके अगर खुद बंद कर रहे हैं, तो मशीन का क्या जरूरत है. मशीन वो सब तो और क्लाइमेट सब में ये करेगा, राइट. So you should do that practice. Now we'll go to the next question. I think it'll be the last, right? No, there's one more. Or is it? Okay. After this. So how can we improve for the next time? Next year when we hold this session, how can we improve? Time management? But he's giving you all the time. He gives He's all asked you the time. And in fact, he cut down his time. Okay, time management, they've given him top. Workshop content, top. Facilitation. Everybody is giving top. Now it's coming down. Time management, I should get that. Full marks. I didn't get time, so I have to rush. Yeah, full marks for So I that. think I deserve that, time management thing. Yeah, that's You the deserve Actually, in Holland, I'll tell a very small story. In Holland, when first I went, वो जो residence permit के लिए मेरा appointment था. Okay. What can we improve? In Holland, कुछ appointment if you get, if you late by even single minute, you can Cancel. I had मेरा visa का, मैं सोचा नहीं, एक week में क्या होगा? Actually मैं 2 मिनट लेता. No means no. I had to book again. I had to go train का 70 euros. So I learned from them. They keep diaries. So we're done now. Next question. Any other thoughts and suggestions? Any other thoughts and suggestions? Kajimut berkat jangki. Kajimut Say it nicely.
So that we get it in the Garo language. Someone got soil tested. Soil testing. All the questions. But tomorrow we'll have one more that should create something different. He said, no, group photo, matafsi la ya do, si group photo sex. He said, group photo la areas related problems, okay, how to invest, okay. Next time, need new sound. Yes, I agree with you. Which sound? Yes, I agree. Whoever wrote this, I really agree with you also. I was very irritated with this sound also. Now that we are ending the session, I'm being honest. Cheaper device for soil, agreed. Agreed. Field knowledge. But I'll just add one point there. Normally, if you go for the lab testing, it will cost around at least 100 rupees and time. I think here it will be less than 5 rupees per test cost. So, in longer run, it will be cheaper. There's community. Somebody says, I want to go home. I want to go home. Okay. Yeah. I left you. From my side. I was not letting you go home. Yeah, more programs like this. Okay. Energy. Okay. How to invest. I think most of you have given good night. Somebody has given good night also. Okay. So let's have a group photo and we shall say good night and goodbye.